mode. Assalamu alaikum, hello, and welcome to all of you. Juma Mubarak, congratulations on the start of a very important area in our CPD's program today. As most of you are well aware, in today's stiff competition and the business environment, you always need to have that extra bit to stand out from the crowd. And soft skills are the set of skills which are now highly valued by employers when they are looking for an accountant in various positions. Keeping in view of this, ACCA has decided to carry on with the CPD program and extend it towards soft skills as well. Our today's topic is negotiation skills. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul tatim min lisani yafqahu qawli. O my Lord, open my heart and ease my task for me, and remove the impediments from my speech so that they may understand what I say. Amen. First things first, most of you would already know me. For those who are joining a session for the first time or haven't attended my sessions previously, I'll quickly introduce myself and then we can continue by going into the thick of things. I'm a highly IT literate and experienced accounting, finance, management, and economics professional. I'm a fellow chartered certified accountant. Besides, I also hold a CFA charter, an anti-money laundering specialization, and BSc Honors in Applied Accounting. I'm also Oxford Brooks certified mentor. In addition to that, I also hold certain other professional certifications. This actually is coupled with over 15 years plus fund of experience gained in top management positions by working in UK as well as in Pakistan. At the moment, I'm serving as a managing partner at Millennium Law and Corporate Company, a firm that's been in business for 30 years and is proud to be the pioneer ACCA practicing firm in Pakistan. I'm also a director at Professional Social Network. Training is my way of giving back to our profession and society at large. And I'm honored to have worked with esteemed organizations in corporate, public, and academic sectors, having conducted mandatory promotional trainings of government officers at MPDD, professional trainings at the likes of National Bank of Pakistan, Lahore Tax Bar Association, Lahore Chamber of Commerce and Industry, various think tanks, the largest global accountancy body, our very own ACCA, UAT, Bahia University, etc. I also regularly contribute to various English language dailies such as Daily Nation, Daily Times, Pakistan Today, and Express Tribune, in addition to contributing to research journals like Blue Chip. I'm a life member and twice serving chairman of Liaison Committee of Lahore Tax Bar Association. I'm also a member of MNP and chairman of Taxation Committee of ACCA. I'm also on the board of several think tanks and obviously associated with the ACCA and other professional institutions, as you can see on your screen. I'll quickly skip through the next two slides as we will be sharing this presentation with you. So let's begin with the thick of things. What are we planning to cover today and how are we going to proceed about it? But before I go further, I'd just like to share one thing, that our CPD series has been going on successfully for a few months now. And I've been conducting CPD events before I became part of MNP, and we are continuing it right now. And we will continue it even after that. This has nothing to do with that process. Why? Because as a professional association, the most important thing is your professional development. And as professionals, we should be able to differentiate our professional engagement and other activities. So, about negotiation, we will start with discussing what exactly is negotiation. What are the various stages of negotiation, the goals and objectives, the process involved, why negotiation is important at all, the essentials of negotiation,
various strategies, models, and tactics, how to manage tough and difficult negotiations, what are questioning skills, and what is the importance of questioning in effective negotiation and communication, body language, and its importance in negotiation. I think ये पहले का होगा शुरू में. No. Can you guys hear me quickly now? Can you guys hear me clearly now? Okay, great. So we'll then discuss what are questioning skills and the importance of questioning within the sphere of effective negotiation and communication, body language and its importance, what are the benefits of negotiation, and we'll culminate our today's session with a discussion of the opportunities effective negotiation bring in for accountants. So first things first, let's begin with discussing what is negotiation. When you listen to the word negotiation, what is the first thing that comes to your mind? Arguing? No. Discussing things? To some extent, maybe. Negotiation कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत एक डिफरेंट या स्ट्रेंज फिनोमेना हो. Negotiation is something we all do in our everyday life. For example, आप घर से निकले हैं, घर की ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, दुकानदार से आप कह रहे हैं नहीं ये तो बहुत महंगी है, इसकी कीमत थोड़ी कम करो. दुकानदार कहता है, लेट से आप कहते हैं जी 200 नहीं, इसको आप जो है the rate should be like 150. दुकानदार कहता है अच्छा चलें आपके लिए 190. आप कहते हैं नहीं नहीं मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें जो है 160 दे सकता हूँ. एंड यू गाइस फाइनली एंड अप एट 165. व्हाट आर यू डूइंग? नेगोशिएटिंग. आपका कोई इशू हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, दो दोस्तों में प्रॉब्लम हो जाती है, घर में दो रिश्तेदारों में इशू हो जाता है. सो एवरीडे लाइफ में जगह जगह एग्जांपल्स बिखरी पड़ी है जहां पे हम नेगोशिएशन करते हैं. प्रोफेशनल लाइफ में प्रोसेस थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उसके असरात और इम्प्लीकेशंस भी ज्यादा वाइडर होती हैं. सो नेगोशिएशन टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर पीपल विद डिफरेंट व्यूज, बिकॉज अगर व्यूज सेम है तो फिर तो कोई इशू होगा ही नहीं, डिस्प्यूट होगा ही नहीं. Two or more people with differing views come together to attempt to reach an agreement on an issue. It is basically a process of persuasive trying to convince someone, communication or bargaining. It is a method by which people also try to settle their differences and disputes. It is a process by which compromise or agreement is reached while avoiding arguments. अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ना चाहें जो सारे प्रोसेस को कलेक्टिवली इंटेल करती है तो वी कैन हैव अ लुक एट सी. नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग बिटवीन टू और मोर पार्टीज, each with its own aims, needs, viewpoints and goals, trying to reach a common ground and an agreement to settle a matter of mutual concern or resolve a conflict in a manner acceptable to all parties. आगे जब हम बात करेंगे तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे. There used to be an old school for negotiation. रशियन स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनकी थ्योरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी. दैट वाज प्री सोवियत ब्रेकडाउन एरा, कोल्ड वॉर एरा. और उस जमाने में एक थ्योरी ये थी कि आप एक स्टैंड लें, उसके ऊपर आपकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको टोटल बिलीफ होना चाहिए और आप डट जाए. नाउ इट्स बेसिकली ट्रीटेड एज अ वॉर ऑफ विल्स. जो भी पहले पीछे हटेगा या अपने स्टांस से मूव होगा वो लूज हो जाएगा. मॉडर्न डे नेगोशिएशन ऐसे काम नहीं करती. मॉडर्न डे थ्योरीज और मॉडल्स जो हैं वो नेगोशिएशन को एक वॉर की बजाय एक ऐसे प्रोसेस की तरफ ट्रीट करते हैं, एक ऐसे प्रोसेस की तरफ ट्रीट करते हैं जो एक विन विन सॉल्यूशन और वैल्यू क्रिएशन की तरफ आपको लेके जाए. खैर इन चीजों को हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे. द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन इज टू अचीव एग्रीमेंट थ्रू डिस्कशन एंड कंप्रोमाइज. इट इज डिफरेंट फ्रॉम आर्ग्यूइंग. व्हाई? Because you are not just trying to persuade the other person that you are right and they are wrong.
You are actually trying to achieve an objective. You are trying to get something you want or need and are prepared to give non-vital stuff for that so that you can achieve your critical goals. So, जैसे हमने बात की, everyone is a negotiator. हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में everyday life में negotiation कर रहे हैं. Kelly Robertson is a very famous author on this topic and has written several negotiating books and is also president of Robertson Training Group. She said something which I always appreciate a lot and holds a lot of value and is actually a guiding principle for anyone striving to become a successful negotiator. She says, most people hesitate to negotiate. Why? Because they lack confidence. क्या हो जाएगा? मैं कहूँगा ना तो नहीं कह देंगे, रिएक्शन क्या आ जाएगा, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा. And because of these fears and the lack of confidence, they never actually try to negotiate when they should. Develop this confidence by negotiating more frequently. So Kelly said कि इसका इलाज भी है. जिस चीज से डर आता है उस चीज को आप करें, डर खत्म हो जाएगा. जितना ज्यादा आप नेगोशिएट करेंगे आपकी स्किल बिल्ड होना शुरू हो जाएगी. और एटलीस्ट ट्राई प्रैक्टिसिंग विद द पीपल यू आर कंफर्टेबल विद इन ऑर्डर टू गेन सम कॉन्फिडेंस. Ask, for example, you can ask for discount from your suppliers. Even in your daily life, like the grocery example that we shared, you can ask for discounts from them. As a consumer, develop the habit, and now these are the words of Kelly that I'm continuing with. Develop the habit of asking for a discount when you buy from a store. And in doing so, be pleasant and persistent, but you should not appear to be demanding. Condition yourself to negotiate at every opportunity, as this will help you become more comfortable, confident, and successful. ओके, हमने ये बात कर ली जी, नेगोशिएशन होता क्या है, ये प्रोसेस है. डिफरेंट व्यूज को हम कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वाइटल गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, विन विन सॉल्यूशन को स्ट्राइव कर रहे हैं, नॉन वाइटल गोल्स देने को हम तैयार है. कैली की हमने बातें पढ़ ली, क्या कहती है जी, एवरीडे अक्रेंस होती है, कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए, बी प्लेजेंट एंड परसिस्टेंट बट नॉट डिमांडिंग. फेयर इनफ. होता क्या है नेगोशिएशन में? ठीक है, मुझे पता है एवरीडे अक्रेंस है. एक ग्रॉसरी वाले की आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, हम सारे करते हैं. मे बी मेरी कार ब्रेक डाउन हो गई, वर्कशॉप वाले से मैंने किया. बट एक फॉर्मल नेगोशिएशन में क्या प्रोसेसेस एंटेल करता है? लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. First of all, like every other thing, negotiation process also starts with outlining of goals and objectives. सबसे पहले तो आप सेट करते हैं कि आपने अचीव क्या करना है, आपके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्राइमरी गोल्स क्या हैं और सेकेंडरी क्या हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी आपकी रेड लाइंस है. देन द प्रिपरेशन. द बेटर प्रिपेयर्ड यू आर, द मोर सक्सेसफुल यू आर टू बी. प्रिपरेशन से हमारी मुराद क्या है? आपको पता होना चाहिए कहाँ और कब आपकी नेगोशिएशन होनी है, इफ पॉसिबल. कौन अटेंडेंस होंगे, आपकी रेड लाइंस क्या हैं जिससे पीछे आप नहीं जा सकते, डिलीवरेबल्स क्या हैं जो ट्रेड करने की खातिर आप ऑफर कर सकते हैं, अपनी टीम को प्रिपेयर करना. ऑल दीज थिंग्स कम विद इन द फ्रेम. हम डिस्कस करेंगे इस चीज को कि देयर माइट बी सम सिचुएशंस जहां पे आपकी प्रिपरेशन लिमिटेड हो, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन ना अवेलेबल हो. ऐसा होता है, प्रैक्टिकली बिल्कुल होता है. इन सच सिचुएशन you try to be as much prepared as realistically possible. The third stage of the process of negotiation is discussion. By discussion, we just don't refer to speaking. Yes, questioning and effective speaking are vital skills, but perhaps listening, if not more, is equally important and is part of the discussion. Then, after discussing, you try to strive towards a win-win situation, which usually should be the best outcome for all parties involved. It may not always be possible, but it should be your ultimate goal. So this is the process of negotiation by which we try to reach an agreement, which is the final outcome of an effective negotiation. If you can't reach one, you try not to break the process and keep on renegotiating. And implementation of what is agreed is the final stage of negotiation. So our 6 stages of negotiations are setting your goals and objectives,
preparing yourself, discussing, negotiating, agreeing, reaching to a final win-win agreement, and then implementing that agreement. Goals और objectives जो हैं, हमने सिर्फ बात की कि सबसे पहली स्टेज है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए. इसके लिए वेरियस ऑल्टरनेट मॉडल्स और थ्योरीज मौजूद हैं. वन दैट इज कॉमनली रेफर्ड टू इज स्मार्ट और स्मैक. एस रेफर्स टू स्पेसिफिक. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए. मैं सीएफओ हूं, मैंने एक बड़ा सप्लायर को ऑर्डर देना है, मुझे इसमें जो रेट सप्लायर दे रहा है इससे 30% रिड्यूस रेट लेना है. स्पेसिफिक और मेजरेबल. अगर आप इसको वेग रखेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी, यू वॉन्ट बी एबल टू एक्चुअली मेजर कि आपने ये अचीव भी किया है कि नहीं, वेयर यू आर स्टैंडिंग. द गोल्स शुड एक्चुअली बी अटेनेबल. आप अगर कहते हैं कि ये जो सप्लायर है इससे मैंने कहना है कि मुझे 10% कॉस्ट पे दे दो, इट्स सिंपली नॉट अटेनेबल. Your goals should be realistic and actually attainable. Why? अगर आप अपने लिए वो गोल रखेंगे जो अनरियलिस्टिक है और अटेनेबल नहीं है और आप कंटिन्यूअसली उनको अचीव करने की बजाय फेल होते रहेंगे तो आप डीमोटिवेट होना शुरू होंगे और सिर्फ आपको नहीं आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. And last but not the least, the goals and objectives should be compatible with your organization's goals and objectives with your own career progression and development. So our goal should be SMAC, specific, measurable, attainable, and compatible. Negotiation process. 6 steps in the negotiation process. इसमें different models होते हैं. मैंने आपको बताया, हम कोशिश करेंगे कि जो major models हैं internationally recognized उनको हम आज कवर करें. ये negotiation process और जो model हमने पहले discuss किया pretty much similar हैं, but let's quickly go through it. The first step is to agree to negotiate, ताकि negotiation process शुरू हो सके. Then you try to gather various points of use and focus on interest, which you can refer to the preparation and discussion phase. Then the fourth step is you try to create win-win options. कि अच्छा ये कर लें, इसमें आपको ये फायदा है, हमें ये है. Then you evaluate various options that you have generated and the counterparty has put on the table to try to create an agreement. Any successful negotiation requires a good understanding of at least 3 core elements. First of all, आपको क्या चाहिए? आप इस प्रोसेस से क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आपकी जो काउंटर पार्टी है वो इस प्रोसेस से क्या हासिल करना चाह रही है? और आप लोग नेगोशिएट कर क्यों रहे हैं? If you understand these 3 basic elements, you would be in a good position to prepare yourself for a successful negotiation. अच्छा, हमने इसमें कुछ terms use की, trade, alternates, relationships. इन सब से हमारी मुराद क्या है? हम क्विकली इन चीजों को देखेंगे क्योंकि आगे जो हमने डिस्कशन करनी है डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, वहां पे बहुत जरूरी है कि हमारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर. बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अहमद साहब to share a poll question with us, and while Ahmed is coming to share the poll question, if you have any questions about what we have discussed till now, please feel free to ask. Okay, poll question जो है हम ब्रेक के बाद करेंगे. आप ऐसा करें कि अगर आपके जहन में अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क, लेकिन अभी इसको फोकस रखें. क्यों? क्योंकि हो सकता है जो आप पूछना चाह रहे हो, we are about to cover that. And I would also like to appreciate you all कि despite a short notice and being on a Friday, जो phenomenal number of attendees है, I've actually just had a look at the number of attendees. So I would really like to appreciate your interest. Ji, any questions? Naimullah Malik is saying, sir, so you will be pleased if you can consider salary negotiation with the boss as an example. Very good question. We are gonna cover that. अभी हम बेसिक आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स कर रहे हैं. जब हमने बीच में केस एग्जांपल्स वगैरह करनी है, वन ऑफ द प्राइम केस एग्जांपल मुझे पता था ये डिस्कस होना है, वो सैलरी नेगोशिएशन ही है. But I was sitting with the chief executive of a company only today, and we were talking about generally
how job interviews go. And he was saying that the worst question to ask in an interview, when you're asked, do you have any questions? The worst thing that you can do is to ask, what will be the salary as the first question. I agree. So he's saying, we get so much put off by this question. If this is the first and the only question asked, what will be the salary? So it has to be termed or coined very cleverly. You're very right, Harun Sahab, and that's what we are trying to teach ourselves today, how to effectively negotiate and camouflage that with the interest of the other party. Sufyan also is saying salary negotiation. Then Raza Nayani is saying how to negotiate successfully if buyer is smaller than the supplier. We will discuss that. Okay. Mohammed Sufyan is saying and negotiation to get hired. Mm-hmm. So salary as well as how to get hired. Then Shakil Nabil Tahir is saying how to always create a win-win situation as it might not always be practical. Mm-hmm. Right? Do you want to answer these? Okay. Fasih Khan is saying what are the types of negotiations? Just here. Fasih, very good question. We are to cover that later on. ये हमारे आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स में शामिल है. बाकी जो आपने क्वेश्चंस किए, हम जैसे जैसे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कवर करेंगे. अभी तो हमने सेशन शुरू किया. अभी हमने किया है नेगोशिएशन क्या होती है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेगोशिएशन प्रोसेस क्या है. जब हम डिफरेंट हमारी केस स्टडीज, डिफरेंट मॉडल्स, थ्योरीज, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे. उसके बाद जब मैं एग्जांपल पे आऊंगा उस वक्त आप खुद ही कमेंट दे रहे होंगे, सर हमारे इसको स्किप कर देंगे, हमें अब समझ आ गया हुआ. So just bear with me, we will cover these areas. Next. The last one is from Taha Abbas. Is saying how can we he's saying how can we negotiate with our boss regarding our importance for them as a team member and to the company as a whole. How can you make your importance felt? Taha, मैं आपको quickly ये share कर देता हूँ. Again, ये आप जितने questions कर रहे हैं ये future areas के साथ which we are about to cover. Taha, दो चीजें. एक, your work speaks volume, but at times you have to effectively speak about your work too. Okay. There is a very thin line, a very delicate balance that you have to maintain. सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, आपने बात वो करनी है जिसमें किसी भी काउंटर पार्टी को, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर ही क्यों ना हो, ये ना लगे कि आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस, उसको ये लगे कि आप उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और उसके इंटरेस्ट के ऊपर फोकस है. दिस इज ह्यूमन नेचर. आप जरा खुद को रख के सोचें. अगर आपका एम्प्लॉई आपके पास आता है, सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं बहुत काम कर रहा हूं, मेरी आप तनख्वाह बढ़ा दें, what is the first thing? You'll get a bad taste in your mouth. You shouldn't, but unfortunately that's the human nature. अब वही एम्प्लॉई आपके पास आ रहा है, वो आके कह रहा है कि सर ये जो आपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट दिया था, इसको अगर हम इस तरह करें तो कंपनी के लिए ये वैल्यू जनरेट होगी, ये एडिशनल इसमें चीज आ गई. ये जो आपने काम दिया था इसको इस तरह कर सकते हैं. ये जो काम है इसके लिए मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर लूँ, थोड़ा सा फैमिली से टाइम मैं इधर स्पेंड कर लूँ, एंड आई विल प्रोबब्ली नीड टू कंपनसेट देम विद अ हॉलिडे. सो परहैप्स इफ इट्स पॉसिबल, these are the things that I'm putting on the table. If it's possible for the company now to consider this thing. अब बात दोनों एक ही कर रहे हैं, दोनों अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं. You put yourself in the employer's shoe. किसकी बात आपको ज्यादा फिजिबल लगेगी, ज्यादा पॉजिटिव लगेगी, and to whom you would be prone to a positive reaction. So this was just to give you a slight idea and example. ये सारी चीजें जैसे मैंने कहा हम डिटेल से आगे इंशाल्लाह कवर कर रहे हैं. Next. Okay, there are quite a few more questions. The question from Adil Jafar Ali asking, at times people have their own objectives while arguing, so how argument is different than negotiation? Very good question. We are to cover that. Okay. And also in negotiation, either party has to compromise, which also differs from a win-win situation. Who is this who has asked this question? This is Adil Jafar. Adil, brilliant question. I would like you to hang on to it. We are going to discuss that. If you are not clear by the time we reach the break, please ask me this again after the break.
Imran Yusuf is saying how to negotiate in difficult situations such as we don't have other alternatives. We are going to cover that. अभी हमने जो red lines का जिक्र किया, that was referring to this situation. Kashif is saying how to negotiate with a monopolistic supplier, monopolies. We will cover that too. Zain Arif is saying, do you focus on other parties' vulnerabilities or strengths to get most out of a negotiation? Both. Okay. Ahmed Hussain is saying, what will we do in a less bargainable situation where bargain is not possible? Try to focus on tradables. What I mean by that will cover. Tahir Hussain is saying, sometimes when you say that you can get the item for that, what you're offering, the reply is, but it's from the, I'm sorry, Tahir, you'll have to rephrase the question. Muhammad Zuhair has asked, Assalamu alaikum, it is a very informative session, but unfortunately I may not be able to attend it in full. There will be a recording available. Zuhair, yes, Zuhair Chaudhary, the recording of the session will be available and will be put up on the Vimeo channel. However, unfortunately, you can only gain CPD sessions by attending it live. So if you have a work engagement, that's unfortunate. We'll put it on for you on Vimeo, but for CPD, you have to attend it live. In fact, those who watch it on Vimeo also, they can claim non-verifiable CPD. Right? That is one form of CPD, and members have to achieve 19 units of non-verifiable as well. I would like to reiterate, thank you very much, Umar Sahib, for bringing this point up. I'd like to reiterate that the poll questions are essential for you to earn a verifiable CPD certificate. We have seen many situations in the past where people do not deliberately or undeliberately answer the poll questions and they come to us afterwards asking for the certificate, and we have to apologize because we have to keep the same standard for all participants. We cannot judge one participant on one factor and another participant on another factor. So my apologies in advance. We will have to assess you on your participation in the poll questions to be able to offer you a CPD certificate. Thank you, Arun sir, for clarifying. Next question. Okay, Bilal Nasir is saying if the other party is an intimidating personality. Right. We are going to cover the personality types, the body language, and the communications in details. Yeah, and of the world's most powerful individual. Wow. I've seen your presentation. Tahir Hussain is saying sometimes when you say that you can get the items for less than what they are offered, what they're being offered, the reply is buy it from there. And the seller gets angry. How to avoid that? We will cover that. Okay, that's a very difficult bargaining, street bargaining situation. Ajit Kumar is saying, I think we should go to the employers for any problem with their alternative solutions. So always keep alternatives available as well. Adding value, obviously, that's a very important area to ensure that your value is perceived by your employers by generating and creating value. Okay, so people were saying that there are audio issues. I hope they've been fixed now. Our team is continuously monitoring the bandwidth situation as the session goes on. So while this happens, please immediately have a look at your own internet connection as well. Sometimes the bottleneck would be on your end. Okay, I think that's all about it. Okay, great. Thank you very much. A lot of people asking about win-win situation. We are going to come on to that. So a lot of questions hopefully will be answered in due time. So let's continue from where we left. सबसे पहले हमने बात की गोल्स की. गोल्स से मुराद ये है कि आप चाहते क्या हैं, कर क्यों रहे हैं नेगोशिएट. वेवर्ड नहीं होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए. ये ऑब्जेक्टिव है. सैलरी नेगोशिएशन है, गोल क्या है, सैलरी इंक्रीज करानी है. नई एम्प्लॉयमेंट लेने जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट लेनी है. सप्लायर से रेट कम कराना है, ठीक है. बायर से बड़ा ऑर्डर लेना है. ओके, हमारे
जी सर ठीक है आप कह रहे थे Okay, apology for the technical glitch. I hope you guys can hear me clearly. If you are not able to hear, just let us know. We have the team working here very diligently to fix any issues that may arise. So सबसे पहली चीज आप गोल्स पे फोकस करते हैं, आप चाहते क्या है और आपको क्या लगता है दूसरा शख्स क्या चाहता है. जब तक आपको उसके गोल्स नहीं पता, उस वक्त तक आप इस पोजीशन में नहीं है कि अपने गोल्स इफेक्टिवली अचीव करने को प्लान आउट कर सकें. ट्रेड्स, what do you and the other person have that you can trade? ट्रेड से मुराद क्या है? एक ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत क्रिटिकल ना हो एंड यू आर इन अ पोजीशन टू गिव इट अवे, लेकिन काउंटर पार्टी के लिए बहुत क्रिटिकल. चले मैं एक बहुत आसान रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं. बिफोर कमिंग टू पाकिस्तान, I was heading the finance department of a multinational as director finance. हमारा जो गाड़ियों का फ्लीट था उसके लिए we were looking for a new workshop जहां पर वो सारी रिपेयर हो सके and all that. And I was the one who had to recommend. मेरी अपनी गाड़ी में फॉल्ट डेवलप हुआ. I went to a workshop और उस वर्कशॉप पे मेरी और वर्कशॉप का जो ऑनर है उसकी जो निगोसिएशन हुई, और वैसे ये पूरी दुनिया में निगोसिएशन का ऑलमोस्ट स्टाइल एक ही है. हमारी जनरल परसेप्शन ये है कि बाहर शायद बड़ी टू द पॉइंट ससिंग निगोसिएशन होती है, एट टाइम यस, बट एट टाइम्स हमारी बड़ी एक टिपिकल एशियन नेगोशिएशन भी वहां पे होती है. सो उसमें वो टिपिकल एशियन नेगोशिएशन के सर ये पार्ट्स, ये लेबर, ये वो, मुझे तो इसमें से लिटरली आई एम नॉट सेविंग एनीथिंग. अच्छा, फनी थिंग आई वाज थिंकिंग, व्हाई आर यू डूइंग इट इफ यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग? I mean, you ought to be here to make money, right? Anyway, to cut it short, I offered him a tradable. जब visiting card exchange हुए, he mentioned that he had applied to our firm, to our company for that contract. I told him that, look, I am in a position to refer that, and I'm going to refer someone who is technically competent. ठीक है, अगर तुम मेरी गाड़ी का सही काम करते हो, टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, मुझे वैसे तुम्हारी कॉम्पिटेंस का मैंने अच्छा सुना है, तभी मैं अपनी जाती चीज तुम्हारे पास लेके आया हूं ना. अगर वो सही तरह होती है और मुझे तुम टेक्निकली कॉम्पिटेंट लगते हो, तो दैट्स समथिंग आई कैन पुट इन राइटिंग. एंड इफ अ पर्सन इन माय पोजीशन इज पुटिंग इट दिस इन राइटिंग, it is very much likely to go in your favor. I'm not doing something that is illegal or wrong. I've been asked to tell who I think is better, and I can mention that I've got my car fixed from you, and you seem the better option. उसको उसका फायदा क्या था? A very lucrative contract की possibility which he can get. मुझे उसका फायदा क्या था? जिसको चंद रुपए नहीं, उसमें चंद पाउंड नहीं बच रहे थे, immediately उसने मुझे ठीक ठाक heavy discount offer कर दिया. Now this was a classic example of offering a tradable. मेरे लिए उस चीज की इतनी वैल्यू नहीं थी. I had to do it anyway, and I was not doing anything wrong. I was just stating a fact. लेकिन काउंटर पार्टी के लिए उसकी बहुत वैल्यू थी. So we created a win-win situation जहां पे दोनों को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे थे. And how that was created? By me being able to offer a tradable. Tradable is something जो आपका क्रिटिकल गोल नहीं है, जो आपके लिए एक्सट्रीम वैल्यू नहीं रखती, लेकिन आपकी काउंटर पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है या हो सकती है. थर्ड, ऑल्टरनेट्स आपके जहन में होना चाहिए. इफ नॉट दिस देन व्हाट? अगर ये एग्रीमेंट कामयाब नहीं होता तो मेरा प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, फिर मेरे पास क्या पोजीशन होगी? क्या वो इससे बदतर होगी? अभी जो ये ऑफर कर रहे हैं, क्या इससे भी बदतर होगी या इससे बेहतर होगी? यहां पे मैं नेगोशिएशन रोक दूं, क्या यहां से रोक के जो मेरा ऑल्टरनेट है मैं उस पर चला जाऊं? आपको इस पोजीशन में प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए दैट यू हैव वर्कड आउट दीस डिटेल्स. आपकी रेड लाइंस क्या है? आप इससे पीछे नहीं हो सकते. निगोशिएट कर रहे हैं, आप 10% डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं मैक्सिमम. 10% से पीछे आप नहीं जा सकते. क्यों 10% से पीछे नहीं जा सकते? इट वुड स्टार्ट ईटिंग अप इन योर मार्जिन. काउंटर पार्टी कह रही है 20% करे, आपकी रेड लाइन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. रिलेशनशिप्स, अगर किसी ऐसी पार्टी से आप डील कर रहे हैं जहां आपका एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप है, तो आपकी क्या हिस्ट्री है? कोई बैड मेमोरी तो नहीं है, कोई आपके आपस के इश्यूज तो नहीं है विच आल्सो नीड्स टू बी वर्कड आउट. और अगर एक नई काउंटर पार्टी से आप डील कर रहे हैं, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू आर ट्राइंग एंड स्ट्राइविंग टू बिल्ड? ये निगोशिएशन जो होता है एक बड़ा
डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट होता है। एक तरफ तो आपकी कोशिश होती है कि आप अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हासिल करें, दूसरी तरफ आप रिलेशनशिप बिल्ड और सस्टेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करके रिलेशनशिप बिल्ड करें, वो भी चीज सही नहीं है। और अगर आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की खातिर रिलेशनशिप बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें, तो वो भी वाइज नहीं है। इट इज अ डेलिकेट बैलेंस दैट हैज टू बी मेंटेन्ड एंड अचीव्ड। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? आपके बॉसेस जिन्होंने आपको नेगोशिएशन प्रोसेस दी है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इन पास्ट ऐसे प्रोसेसेस की आउटकम क्या रही है? प्रीसीडेंट्स और बेंचमार्क्स क्या हैं? किस तरह आप ज्यादा इफेक्टिवली उनको एक बेहतर आउटकम की तरफ लेके जा सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अगर आप निगोशिएट सक्सेसफुली कर लेते हैं, आपकी लेट्स से प्रमोशन हो जाएगी। नहीं करते तो आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सिमिलरली काउंटर पार्टी के लिए क्या है? जब भी निगोशिएशन हो रही है, एक से ज्यादा पार्टी मौजूद है। अगर आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, तो काउंटर पार्टी की भी कुछ होंगी। हो सकता है उतनी ना हो जितनी आपकी है, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। यू माइट बी एबल टू यूटिलाइज देम फॉर योर बेनिफिट। पावर, एक बड़ा अच्छा सवाल आया था, हु होल्ड द पावर इन अ रिलेशनशिप? क्यों आपकी डायनामिक्स चेंज हो जाती है। अगर आप एक सुपीरियर पोजीशन में हैं, यू आर इन अ डिफरेंट पोजीशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। और अगर आप एक इंफीरियर पोजीशन में है, you would have to work very delicately in a different manner. Who control the resources? Who stand out to lose more if the agreement is not reached? What power does the other person have to deliver what you hope for? दो मैनेजर्स का एग्रीमेंट हो रहा है, आप उनसे स्ट्रेटेजिक चेंज की बात कर रहे हैं, वो चाहे भी तो आपको वो डिलीवर नहीं कर सकता। Is the counterparty the right person to actually put that requirement on the table in front of? Possible solutions क्या हो सकते हैं? ये जो हमने अभी डिस्कशन की, ये वो की एरियाज हैं जिनको आपने देखना होता है, वो की टर्म्स हैं जो आगे डिफरेंट मॉडल्स में यूज होती है। नेगोशिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है, क्यों हम ये सेशन कर रहे हैं, क्यों इतनी हम प्रिपरेशन करें, क्यों हम इतना टाइम लगाएं नेगोशिएशन पे? ठीक है, हमने जो करना है करेंगे, नहीं करना आप जाएं अपने रास्ते, हम जाते हैं अपने रास्ते। इट डजंट वर्क दैट वे इन प्रैक्टिकल लाइफ। सबसे पहले इट हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, and conflicts, remember, doesn't benefit anyone. They add to your tensions, anxiety and cost. Resolving the conflict is always beneficial and cost effective as compared to prolonging and confronting one. Negotiation also helps you reach agreement, achieve your objective and get along with people better, and this ultimately results कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल होते हैं, जिसका मतलब क्या है कि आप अपने कैरियर में ज्यादा क्विकली एडवांसमेंट्स अचीव कर सकते हैं। Obviously, you can always reach better outcomes for your organization through negotiation than confrontation. अब एक मिसाल ले लेना, अगर आपकी नेगोशिएशन हो रही है किसी शख्स से, सप्लायर या बायर आए, यहाँ पे एक साहब ने मिसाल दी कि अक्सर लोग कह देते हैं जी आप फिर उसी से ले लें। दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर जो आप करते हैं। क्यों? हो सकता है आज काउंटर पार्टी स्मॉल है, कल तक उसमें स्मॉल तो नहीं रहना, या हो सकता है कि आप काउंटर पार्टी को स्मॉल समझ रहे हो, वो एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर। जब एक दफा आप अपनी ब्रिजेस बंद कर देते हैं ना, एक दफा आप रिलेशनशिप तोड़ देते हैं, उसको दोबारा उसवार करना, बिल्ड करना बहुत मुश्किल और कॉस्टली होता है। Whether you're always aware it or not, you actually spend a significant part of your day negotiating. That is why, beside other factors, good negotiation skills are so important. Okay, so far so good. So, what exactly are the essentials of negotiation skills? हमने पहले बात की प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन फ्रैंकली इज एवरीथिंग। अगर आप अनप्रिपेयर्ड हैं, काउंटर पार्टी प्रिपेयर्ड है, तो बी रेडी, वो आपसे जो चाहेगी ले लेगी। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, काउंटर पार्टी अनप्रिपेयर्ड है, यू आउट टू बी सक्सेसफुल। अगर दोनों अनप्रिपेयर्ड है तो फिर अल्लाह ताला ही भला करे, और अगर दोनों प्रिपेयर्ड हैं तो इट वुड डिपेंड ऑन हाउ रीजनेबल बोथ पार्टीज आर, whether both are striving for a win-win solution, ready to offer tradables in order to achieve their critical goals while not crossing their red lines. Obviously, preparation से मुराद ये है, सबसे पहले तो आपको अपने goals objectives पता हो, काउंटर पार्टी के goals objectives पता हो, अपनी ऑडियंस का पता हो, ये पता हो कि कौन से questions आपने पूछने हैं,
जितना नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपके पास है उतने बेटर प्रिपेयर्ड आप होंगे. ऐसे नहीं कहते नॉलेज इज पावर. Listening is one of the most important skills in the negotiation process. हमारी सोसाइटी में वैसे भी गुड लिसनर्स कम हैं. जब आप देखें कभी भी कोई इशू हो ना आपके बिजनेस में, अगर आपका कोई कस्टमर आया है जो आपसे अपसेट है, इवन आपका कोई बॉस आया है, आपका कोलीग आपके पास आया है, आप कभी इस चीज को आजमाइएगा. अगर आपने नहीं आजमाया, आप कुछ भी ना कहें, खामोशी से उन्हें सुनते रहे. 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो जो हम कहते हैं ना वेंटिंग हिज एंगर, उनकी भड़ास का निकल जाना. When that happen, आपने कुछ भी नहीं किया होगा, अभी आपने कुछ भी डिलीवर नहीं किया होगा, 70-80% मामला वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा. It would immediately come down here. And in most cases, they would rather build very good rapport towards you. So listening is critical. There is a saying, the more you say, the more you give away. So let your counterparty do that. Be a good listener. जब आपकी counterparty ज़्यादा बोलेगी, they'll be giving you a piece of their mind, what they are thinking. They would be handing you vital, critical information themselves. Let them do that and use it. Use it empathically. अच्छा, और लिसन सिर्फ आपने इस तरह नहीं करना कि मैं कोई मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूँ, इससे इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ. लिसन एम्पैथिकली, सुने उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं. देन ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन देयर शू. अगर मैं इनकी जगह होता मैं क्या फील करता, जो मैं अब ऑफर करने लगा हूं उन पे इनका रिएक्शन क्या होता, अगर मैं इनकी जगह होता मेरा रिएक्शन क्या होता. ऑल दीज थिंग्स वुड असिस्ट यू. प्रॉपर क्वेश्चनिंग कैन बी द अल्टीमेट डिफरेंस in a successful negotiation, especially when faced with dead ends. Ask a lot of open questions. We will discuss what open questions are. But perhaps one of the most important factor in negotiation skills is your body language. ये जितने फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इनको इंडिविजुअली हमने डिटेल से डिस्कस करना है. क्वेश्चनिंग स्किल्स क्या होती हैं, ओपन क्लोज फनल क्वेश्चंस क्या होते हैं, किनको यूज करना चाहिए, क्या बेनिफिट होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, किस तरह हमें यूज करनी है, लिसनिंग, ऑल दीज थिंग्स. लेकिन अभी आपको एक समराइज्ड आइडिया मिल रहा है कि ये चीजें अहम है नेगोशिएशन में. एज पर डिफरेंट स्टडीज इट इज बिलीव्ड कि बॉडी लैंग्वेज आपकी 55 to 60% of communication. Some studies rank it even higher, up to the level of 80%. So you have to stay positive. This will be discussed in detail later. Effective verbal communication. Talk to your counterparty in a manner suitable for them. ये नहीं कि आपकी काउंटरपार्टी एक इलिटरेट बिजनेसमैन है और आप उनसे जी वो टेक्निकल जार्गन में बात कर रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आएगी आप क्या कह रहे हैं. So your communication should be altered to the level of the counterparty you are dealing with. There are many different types. You can be formal, where you are precise and analytical. You can be purposeful, trying to be demanding and competitive, not useful in most situations. You can be relaxed. Don't push the things too much. Or you can be warm, expressive, sociable, and often persuasive, something people normally tend to associate with a lot. And you should have the right mental approach. अगर आप ऐसे लेके जा रहे हैं, ओहो क्या मसला आ गया, I would have to negotiate, it's a problem, you won't be successful. If on the other hand you are viewing it as an opportunity, आपने अपनी बुनियाद बेसिस सही रख ली है, and rest the entire process will build upon that. अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट एरिया विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने डिस्कस क्विकली किया निगोशिएशन क्या होती है, क्यों जरूरी है, डे टू डे कैसे होती है, निगोशिएशन के स्टेप्स क्या हैं, डिफरेंट स्टेजेस क्या है, कौन सी स्किल्स इसमें इंपॉर्टेंट है. उन स्किल्स को आगे हमने डिटेल से डिस्कस करना है जहां पे हम सिनेरियोस की बात करेंगे. निगोशिएटिंग स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स क्या होती है. बट बिफोर वी गो देयर, वेरी क्विकली we'll have a poll question on your screens. And you have it now. You'll have 1.5 minutes to answer this question. And as Harun Saab has shared, इस stage पे right या wrong answer matter नहीं करता. You won't be credited for it, but answering actually contributing matters. क्योंकि इससे हमें आइडिया होगा कि आप एक्टिवली इंगेज हैं या नहीं, और वेरीफाइबल सीपीडी सर्टिफिकेट आपको इसी की बेसिस पे मिलेगा. पोल क्वेश्चन आंसर करने का तरीका ये है, जो ऑप्शन आप समझते हैं उसमें क्लिक करके सबमिट पे आप क्लिक कीजिए.
The question is, what is negotiation? The first option is arguing. The second is staying put on a stance. And last one is striving for a win-win solution. आपको जो सही लगता है उस पे आप click करें. Sir, in terms of numbers, this is probably the highest percentage of response we have got. Absolute number, not proportion. They got 226 in it, right? Yeah. So like 63% of that. And it's growing, and it's very rapidly growing. Come on, guys, we have last 15 seconds. Come on. You just need to give your feedback. It doesn't matter you're right or wrong. Just show that you are attending. Okay, and the time's up. Okay. Gee, Harun bhai, what are the results? Can you see the results on the screen? Yeah, I can see them now. But I love to hear them in your voice. All right. 6% of the people think that negotiation is actually arguing. What do you believe? Is that right? There is a 5% number who thinks that you should hold your stance, which means you will never be able to negotiate. The third one is 89% striving for a win-win situation, and that's the correct answer. Indeed. So देखें हारून साहब को भी बिठा के हमने ये बता दिया. तो बहरहाल well done to all of those who have given an answer. You at least contributed. Those who selected the last option, option C, got the answer right. बाकी सबके लिए दोबारा ये old school of thought था. During Cold War era कि जी एक stance बनाएं और उस पर टच जाएं. Modern day communication, be it in business, corporate sectors, be it in public practices, be it in educational sector, any sector doesn't work that way. Modern era queries revolve around trying to create value, trying to create win-win solutions, offering tradables. So the communication process is not about staying put on a stance and not relenting, arguing. It is about striving for a win-win solution. So well done. अगर आपके कोई quick questions हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे related, क्योंकि जो आपके बाकी cases आ रहे हैं ज़हन में बहुत logical और अच्छे हैं और उनको हम cover कर रहे होंगे. तो अगर कोई अभी तक से related question है, please feel free to ask. Any questions, Harun bhai? There are a few questions. Sure. Okay. Does being prepared mean creating leverage by any means, no matter being negative or positive? That's Tahir Hussain. ताहिर साहब, आप एक चीज देखेंगे कि ये अभी हम जितनी थ्योरी स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं ना, ये सारी टाई अप होती है विद व्हाट वी हैव बीन टोल्ड इन आवर बुक्स. मिसाल के तौर पे क्रिएटिंग विन विन सॉल्यूशन, दूसरे की जगह खुद को रख के सोचो, ऑफरिंग ट्रेडेबल्स एटसेट्रा. आपकी इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप नेगेटिव है ना, आप बॉडी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, आगे डिफरेंट एरिया में पढ़ेंगे, कोई सिस्टम ऐसा मौजूद है नेचर का कि काउंटर पार्टी को वो कम्युनिकेट हो जाता है और फिर वो भी इंसान है. अगर वक्ती तौर पे वो रिएक्ट नहीं कर सकता, आपसे दब भी जाता है, तो जब उसको मौका मिलेगा वो रिएक्ट करेगा. याद रखिए हमने डिस्कस किया था कि आपके दो क्रिटिकल एम्स हैं जिनको आप बैलेंस कर रहे हैं. एक अपने इमीडिएट गोल्स अचीव करना, दूसरा रिलेशनशिप बिल्ड करना. तो अगर आप नेगेटिव साइड पे जाएंगे, मे बी इन सम केसेस आप शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करने की कीमत पे. इट्स नॉट समथिंग यू स्ट्राइव फॉर. सो प्रिपरेशन से हमारी मुराद ये है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास हो जितना पॉसिबल है अपने बारे में, काउंटर पार्टी के बारे में, और उसके अकॉर्डिंगली आपने डिफरेंट प्लान डिवाइस किए हो. क्या क्या चीजें हम इन्हें ऑफर कर सकते हैं, कौन से ट्रेडेबल ऑफर कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज या पार्टनरशिप क्रिएट की जा सकती हैं जिससे अल्टीमेटली मेरे वाइटल गोल्स में अचीव कर सकूं और काउंटर पार्टी को भी फील हो कि दे हैव आल्सो गेन्ड समथिंग आउट ऑफ द रिलेशनशिप. Next. Then I have asked a very interesting question. It says, what are your thoughts on Donald Trump as a negotiator? Given his style of negotiating, it's said that he can negotiate better deals for the US. The way Donald Trump is negotiating right now, I don't believe he will continue this if he is elected. We have a previous example. I won't name the guy, but you all know who I'm referring to, a president of the same country.
who used to speak very differently during his election campaign, but once he became president, his actions were different. Actually, me and Harun Saab and Sajid Saab were discussing something on the lines the other day, and I shared my thoughts. It's more playing to the gallery. Unfortunately, extremism has been rising across the globe, and most politicians choose to play to that segment. So the style of Donald Trump's negotiation is not effective at all. Although we should try to keep politics out of the scope of this course, but let me tell you that politicians are by far the best negotiators, isn't it? I mean, even in the current situation, there are talks of negotiation between different parties on Panama Leaks. So I'm sorry, but I want to comment on that, or we'll go into an area which would never end. Exactly. So let's keep politics out of the game. The next question is from Adil Rahman. What if you realize that the other party is not ready for a win-win solution? Okay, a very good. This is actually a very good question. होगा at times ये होगा. You can try to create something जिसको वो perceive करें अपनी win, ठीक है? Without giving them that what you are getting out of them was critical for you. अगर ये भी possible ना हो, कोई इतनी stubborn party है कि वहां पे आपको नजर आ रहा है वो ओल्ड स्कूल है कि नहीं हमें आपसे ये चाहिए, आपको हमें कुछ नहीं देना, आप ये मानेंगे वरना कुछ नहीं होगा, और अगर आपके पास उससे बेहतर प्लान भी है तो आप रिलेशनशिप तोड़ेंगे नहीं, आप प्रोसेस को ऑन छोड़ दें, but shift on your plan B for the time being. Next. There's a simple question linked to this one. Usman just wants an example of a win-win situation. Okay, example of a win-win situation. मैं आपको एक रियल लाइफ पाकिस्तान की एग्जांपल कोट करता हूँ. अच्छा, मैं पहले कॉर्पोरेट की करने लगा था, लेकिन अभी मेरे जहन में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आई है जो है पब्लिक सेक्टर की, लेकिन क्लासिक एग्जांपल है विन-विन सिचुएशन की, और उस सेगमेंट से जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते. मैंने आपको रेफर किया कि मेरी ट्रेनिंग पोर्टफोलियो में एमपीटीडी भी शामिल है. तो ये जो मॉडल पुलिस स्टेशंस पंजाब में शुरू हुए थे, इनके जितने एसएचओस थे उनकी अपॉइंटमेंट से पहले एक मैंडेटरी ट्रेनिंग थी विच आई कंडक्टेड. अगर वो उसको पास करते तो उन्होंने एसएचओस बनना था. वहां पे हमारा यही टॉपिक चल रहा था. वन ऑफ द ऑफिसर्स शेयर्ड द डिटेल विद मी एंड आई वाज प्रीटी इंप्रेस्ड and I'm going to share that with you. SHO साहब थे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे एक जुलूस निकला हुआ था. उनको ऑर्डर्स ये थे कि ये जुलूस जो है ना असेंबली के सामने नहीं आए एट एनी कॉस्ट. सिचुएशन टेंस होती जा रही थी. वर्बली ऑन कॉल उनको सुपीरियर की तरफ से ऑर्डर आ गए, यूज फोर्स इफ यू हैव टू. बट द गाय न्यू दिस. कोई रिटन ऑर्डर नहीं थे. अगर वो फोर्स यूज करते और उसमें कोई सिचुएशन वर्स होती, इट वॉज हिज नेक ऑन द लाइन. देयर वॉज नो एविडेंस दैट ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू यूज फोर्स, लेकिन वो अपने सुपीरियर को भी ना नहीं कर सकते थे. व्हाट द गाय डिड वॉज, ही टोल्ड मी कि पुलिस ये करती है कि जितने इलाके के अहम लोग होते हैं ना उनकी फाइल्स बनाई होती हैं. ये मौलवी साहब हैं, इन्होंने इन्फ्लुएंस है इनका, इनकी एक फाइल मेंटेन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि उन लोगों से काम पढ़ना होता है. सो द गाय न्यू अबाउट द गाय हु वॉज लीडिंग, जो मौलवी साहब एजिटेशन को लीड कर रहे थे. What he did was, first he went to the मौलवी साहब, tried to negotiate कि मौलवी साहब हम भी मुसलमान हैं, हमारे भी वही सेंटिमेंट है, हमारा मुल्क है, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर ये हैं, वी शुड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर. इतने लोग ना ले आए हो मेरे कहने पे, अब मैं कैसे मोड़ लूं, ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी. आप हट जाए, हमने कुछ नहीं करना, हम बस सामने प्रोटेस्ट करेंगे. He created a win-win situation. उसको ये आइडिया था कि जो जनाब लीड कर रहे थे, he had this weakness of gaining importance and limelight. He said to him कि यहाँ पास वो जो ओपन जगह है, ग्राउंड है, वहां पे मैं आपको पुलिस प्रोटोकॉल में साथ लेके चलता हूँ. कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको हर्डल नहीं होगी. वहां पे हम मीडिया को बुलाते हैं और मीडिया के सामने आपका ये सारा प्रोटेस्ट होगा और पुलिस आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही होगी. और उसके साथ उसने एक ट्रेडेबल ऑफर किया. मौलवी साहब के मदरसे के 2 बच्चे पकड़े हुए थे, उसने कहा जी उनको भी मैं अभी बुला लेता हूँ, वो भी आपके साथ यही पे शामिल होते हैं. ठीक है. सो व्हाट ही डिड वाज ही ऑफर्ड द ट्रेडेबल. उसके लिए इतनी वैल्यू नहीं थी, छोटे मोटे झगड़े हुए थे, उसमें पकड़ के डाला हुआ था. मौलवी साहब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, उनकी पूरे मोहल्ले में इज्जत बन गई. सेकेंडली, जो उसकी रेड लाइंस थी, उसको पता था मेरी रेड लाइन ये है कि असेंबली तक मैं जाने नहीं दे सकता.
लेकिन उसको ये भी पता था कि रिलेशनशिप भी मैंने ब्रेक नहीं करना। ही वॉज प्रिपेयर्ड, उसे पता था मौलवी साहब की हिस्ट्री क्या है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है, किन चीज पे इन्होंने कैसे रिएक्ट करना है। ही क्रिएटेड वैल्यू फॉर मौलवी साहब कि आपको वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, मीडिया को भी हम बुला रहे हैं, वहां पे एजुकेशन भी हो रही है, हम आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, आपको लाइमलाइट भी मिल रही है, आपका भी मकसद पूरा हो रहा है और उसके भी गोल उसमें अचीव हुए। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ विन विन सिचुएशन। मौलवी साहब ने बिल्कुल प्रोटेस्ट कर लिया, उनकी वाहवाही भी हो गई और उनको ये भी सेटिस्फेक्शन हुई कि जिस कॉज के लिए वो थे, वो तो अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है, उस कॉज को भी उन्होंने प्रॉपर्ली एड्रेस किया। ऑफिसर ऑन ड्यूटी को ये हुआ कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ विन विन सिचुएशन। इसको अगर आप कॉर्पोरेट एग्जांपल पे ले जाएं वेरी क्विकली, आई शेयर अ कॉर्पोरेट एग्जांपल टू। दो पार्टीज नेगोशिएट कर रही हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल है बाय द वे, मैं नाम नहीं ले रहा बिकॉज दे वर माय क्लाइंट्स। दो पार्टीज नेगोशिएट कर रही हैं। एक पार्टी ने ऑफर किया है रेट, क्योंकि वो एक मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में है, जो क्वेश्चन पहले डिस्कस हुआ, और उसको पता है कि ये मजबूर है काउंटर पार्टी मेरे से लेने के लिए, अदरवाइज मुल्क के अंदर इनको ये चीज नहीं मिल सकती। काउंटर पार्टी ने क्या किया, एक कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप था जिसके और बिजनेसेस थे, उन्होंने उसकी एक ज्वाइंट पार्टनरशिप एक दूसरे बिजनेस की ऑफर कर दी जिसमें मूव करने के लिए ये इंटरेस्टेड थे। Because of that offer and that extra value that was created, despite being in a monopolistic position, this party actually agreed to give serious rebate to the counterparty. So आपको मैंने दो एग्जांपल्स दी, एक कॉर्पोरेट सेक्टर की, एक पब्लिक सेक्टर की, जहां पे इन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सिचुएशन कैसे इन चीजों को यूज करके, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, रियल लाइफ प्रिंसिपल्स हैं जिनको यूज करके लोग डिफिकल्ट सिचुएशंस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके अपने गोल अचीव कर पाते हैं। आंसर थोड़ा सा लंबा हो गया जी। Too many questions now. I have to give a Okay, just 3 questions and then we'll move here. Okay, so very, very brief answers, please. In a situation, sorry, there's a question very simply saying, what if negotiations don't succeed? Go to plan B. Next. Okay. In a situation, both the communication parties are standing on their stance and not accepting each other. How can the third party intervene and help to handle the situation in a win-win situation? You're probably talking about Pakistan, India. We'll cover that later next. How to negotiate with banking personnel for reduced rates on leasing and reduced charges? I referred to one thing before. You either have to offer them a tradable, and you have to see whether the person you are discussing a particular proposal with is actually in a position to deliver that. So right person को approach करें with right value creating opportunities, then everything is possible. Sir, मेरा ख्याल है हमने एक क्वेश्चन के टाइम में 3 कर लिए हैं, तो 7 और पूछ लें. The next question is how to convince a boss if your boss doesn't give you a fair chance to speak and assumes the result himself. If the boss doesn't give you a fair chance to speak, try to create value where you can and communicate with him by alternate means. You can always send a very polite email which is considerate of boss point of view. हमारे प्रॉब्लम क्या होता है, आपको एक टिपिकल ईमेल उठाएं, शुरू होती है Dear sir, Assalamu alaikum, I did this, I was there, I. The boss is not interested in your I. The boss is interested in his I. So first approach his I, then he will speak about your I. We'll discuss that more. Next. Zuman is asking how many poll questions. The answer is several. We can't number them. That's a secret. Okay. Kaisar Aziz is asking, sometimes they have no clear information about the party. Then what we have to do? Kaisar Saab, that is very critical. You should try to get as much information as is possible. उसमें I appreciate कुछ points ऐसे होते हैं जिससे beyond आप नहीं जा सकते. That is fine. You can't do what you can't do. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास information नहीं है, आप कोशिश ही ना करें information लेने की. And with this age of technology, अब तो बहुत ज़्यादा चीजें आसान हो गई हैं किसी के बारे में भी information लेने के लिए. Next. Arun is saying, please conduct more seminars on soft skills. I'll just briefly tell you what the plan is. My calendar looks filled up already. But week commencing 16th, we are inshallah going to start our pre-budget seminars. Inshallah. But at the same time, on Saturdays, that is 14th and 21st,
we are going to hold 2 sessions on financial planning in financial modeling using Microsoft Excel. We are trying to teach a software on webinar for the first time. We're looking forward to it. And then there's a whole list of CPD events that we are conducting with Umar Bhai, with other trainers across Pakistan, inshallah, in the near future. And in those CPD calendars, we have a lot of soft skills topics too. Exactly. So congratulations. Exactly. Next. Most important skill set one is required to bring to the table before negotiation process begins. This is Gulnaz. What is the one most important skill set? So welcome, Gulnaz. Good to hear from you. All of them are essentially equally important, but if I would say one that is most critical, I would have to choose between your body language and listening. Okay. Muhammad Amin saying how to negotiate with rigid people. I think we've answered this question a number of times. Rana Hafiz saying how to communicate effectively and keep myself relaxed under pressure in front of management and board of directors. We'll be covering that, especially when we'll be discussing questioning and body language. Waqas Asghar is saying how long has it been since the webinar started? We started at 3 o'clock. Sound check. Resolve. Nothing is being heard. I think this audio issue the team is trying to handle, but let me, when the session continues, let me have a look at it once again. I think there's something wrong with our systems. Do we go for more questions? There are about 10 more questions. Let's finish them. Muhammad Ali is saying how to negotiate a situation where your boss, with your boss, when he judges your performance from third-party words. Somebody else has said something about you to the boss. Look, never be confrontational with a person in a superior position, one thing. Secondly, as I said, set your goals and objectives. Your goal and objective here should be to make the person realize of your value and contribution. आपने दूसरे की नेगेटिव बात को काउंटर करने की आपको जरूरत उतनी नहीं रहेगी अगर आप अपनी पॉजिटिविटी दिखा सकें. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद प्रिपरेशन. अगर आपको ये पता लग जाए बॉस खुद आपके बारे में क्या सोचते हैं, हो सकता है बॉस की आपके बारे में अच्छी राय हो और वो हारून साहब से डिस्कस कर रहे हैं, हारून यार बंदा तो ये बहुत अच्छा है तो इसके बारे में सप्लायर ने ये बात कही. दैट वुड हेल्प यू. सप्लायर ने क्या कहा, बी प्रिपेयर्ड. देन create value for the boss and try to communicate in a manner that addresses his view. Let's say एक सप्लायर ने, ये एक कस्टमर ने शिकायत की कि जी इन्होंने बदतमीजी की है मेरे साथ, या एक सप्लायर ने कहा जी मैं आपका इतना पुराना सप्लायर हूँ, इन्होंने मुझसे जी ब्रैग मांगी है. लेट्स से गलत का, लेकिन बॉस तक बात पहुंच गई. अब दो चीजें, आप बॉस के सामने जाए, छूट क्या रहा है, मैं तो ऐसे कर ही नहीं सकता. एक जो हमारा ट्रेडिशनल वे है. दूसरी चीज ये है कि आप बॉस के पास जाएं, उनको ये शेयर करें एट वेरियस अपॉर्चुनिटीज आपने बिजनेस के लिए जो वैल्यू डिलीवर की, और माजी में अगर मौजूद है मिसालें ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां पे आपने उन्हें इन्फॉर्म किया. और ये कि आपको कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल होते हुए अपनी एथिक्स, अपने कैरियर को ऑन द लाइन इस जरा से बेनिफिट के लिए पुट कर दें. व्हेन यू वर्क अलोंग दीज लाइंस the boss would be more receptive to you. Anyway, इसको भी हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे. Next. Okay. Can you give an example of negotiation with labor unions? We will discuss that. मैं actually National Bank के साथ काम कर रहा हूँ, so I know where you're coming from. Next. Hamza Arif is saying not Pakistan, India. I'm not sure what he wants to say. Probably doesn't want to say let's not discuss Pakistan, India. No, he asked the question कि दो पार्टीज जो हैं अगर बिल्कुल रिजिड हो, हिल नहीं रही, तो कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान इंडिया को रेफर नहीं किया था. Okay, मैं वैसे कह रहा था. Next. Okay. Tahir Hussain saying does being friendly tends well in negotiation or it should be professional? Look, being friendly doesn't mean it has to be on the cost of being professional. For example, if you have a slight smile on your face, that makes the other person comfortable. आगे हम पढ़ेंगे polite but firm. So ये एक बहुत misunderstanding है कि if you are a bit polite, it's not professional. It is very much professional. Yes, you shouldn't cross the line. You shouldn't be like going beyond what is reasonably acceptable. Next.
Tahir Hussain is saying does be actually you get professional. Wala Bilal Nasir is saying in case of negotiation with government officials, it is normal practice of under the table payment, unavoidable. What is your stance on it? My stance is this is unethical and it should be avoided at all costs. Next. Questions keep coming. Mohinder Kumar says he wants to ask a question here. Mohinder Kumar, you're more than welcome to post your questions. Usman Muhammad Ashraf says how to negotiate salary package in an interview. We've discussed this. Sayyid Shoaib Kazmi says, are we still on negotiation side or I am stuck? We are still on negotiation side. We are answering questions. How to, all right. Asad Ashad says how to access the limit till which the party will reduce to price. Sorry, so it's about pricing limitation. Give some factors apart from past practices. That's it. There are more we will be covering these things in the coming sessions. So let's quickly, in the next 5 minutes, try to go through negotiating strategies and tactics. We'll then have a quick 15 minutes tea break, and on our return, we'll resume and finish it off. And we'll have the poll questions there too. So the first one is RAGPAC model. RAGPAC is the abbreviation for rapid, analysis, debate, propose, agreement, and close. You start by trying to building rapport between the negotiating parties. If it's a new party, break ice, greeting. If it's existing party you're dealing with, try to remember the old times, build upon them. If there were any issues, try to resolve them. Analysis, analyzing each other's needs and concerns. Debate, but in a calm and composed discussion. Debate does not mean arguing. Debate means listening, questioning in a delicate manner, and leading the discussion towards where you want it to go. And propose the best ideas, which should be floated by both parties until a consensus can be built in order to achieve an agreement and close the process. आपके सामने 4 डिफरेंट मॉडल्स मौजूद हैं जो टिपिकल प्रैक्टिकली होते हैं. पहला मॉडल क्या है? एक पार्टी कहती है मैंने हर सूरत पे जीतना है, दूसरी कहती है यार इनको पुराना लगे, इनको पुराना लगे, इनको पुराना लगे. So in such a situation where you are stiff on your point of view and the other party is overly soft, you'll end up winning. The other one is if you go down that box, you can see both parties are arguing, pointing at each other, staying on their point of view, and you'll most likely end up breaking your relationship and both would end up losing. The third one is both parties have a good mindset, both know the negotiation process, both are ready to offer tradables, both are ready to create space for each other, both are looking not to compete but to partner in order to excel and generate value, and more likely than not, you'll both end up winning. And last but not the least, you are too soft and the other party is following the old school and you'll end up losing. So the best area is where both parties understand and collaborate in order to achieve a win-win situation. So how to practice win-win negotiation? First of all, इंसान है, robot नहीं है, आपस में rapport build करें, try to identify common goals, proper understanding of beliefs, goals, different options which are win-win for both of you, and any hidden stakeholder motivation, be it for your side or for the counterparty. Paraphrase for confirmation and affirmation. आपका मतलब यही है, आपने यही कहा, अच्छा तो आपका मतलब है कि हम लोग इसको ऐसे करें. Analyze the outcome and risk. Summarize what was agreed upon at the next step, even if they are small steps. So if you are stalled, try to go back to a fundamental factor that you both had already agreed on and can continue to agree on. Build on the common ground. Recycle if necessary. Avoid emotional responses. This is probably the toughest one क्योंकि हम सारे इंसान हैं और कुछ हमारे खित्ते में हमारी egos भी बहुत ज़्यादा होती हैं. So we often, even if there is a perceived insult, tend to react very harshly. Avoid that. You have to be better than that. आप educated हैं, trained हैं, that should reflect in your dealing. You should be absolutely professional about it. Try to control them. Consider interim options or even postponement of the negotiation process rather than ending up breaking the process if an undesirable outcome is imminent or if key information is missing.
अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये बनता है, ठीक है उमर जहीर मीर साहब आप कह रहे हैं इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए, लेकिन काउंटर पार्टी भी तो कह रहे हैं कैसे करें, कितनी दफा करें, हम भी इंसान हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Yes, I agree to that, and I hear that a lot. So with this slide, we'll cover this. Or in fact, we have the break time. Why don't we go to break, and then we'll come back and begin with discussing about how to handle emotions. So it's almost 15 past 4. Let's have a quick tea break. आप सारे fresh हो जाइए, get some fresh air, चाय पीजिए, and I'll see you all exactly in 15 minutes.
Assalamu alaikum, hello and welcome back. We are almost halfway through our session. हमने जो सारी बातें डिस्कस की अभी तक, they are very important and critical. But perhaps the most important elements, being human beings, is about handling our emotions. ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये बात की थी कि अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होता है, एक्चुअल या परसीव स्लाइट, which means insult आपको फील होती है, तो obviously you are also human, you are bound to react. So is the counterparty. So how should you respond in such situations? We have lined up some emotional challenges and the recommended responses and the tips how to try to achieve them. If you are feeling angry or exasperation, you should allow the venting not on the counterparty but somewhere else. Go in a separate room. Try to let it out so that you can calm your nerves, control yourself, then come back in the room. Try to think, probe why. Why am I feeling angry? क्या हुआ है? किस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है? क्या दूसरा यही तो नहीं चाह रहा? I shouldn't give them what they are trying to get out of me. If you feel insulted, ask yourself, was it really insulting or is it just that I'm feeling it? If it is insulting, why the counterparty is doing that? Be very calm, calculated and rational. If you are feeling guilty, try to focus on the issue on hand right now. If the counterparty is trying to butter you up by false flattery, refocus on the issue on hand. Don't let them get out of you what is not due. So the tips are, don't lose your cool. अगर आपने कभी कोई स्वान देखी हो, जिन लोगों को वाइल्ड लाइफ का शौक है या कोई हंटिंग का शौक है, तो आप देखेंगे बड़ी कामली ऐसे पानी में खड़ी होगी, cool and calculated. You should be like that when you are dealing with negotiation. Try to diffuse with acknowledgement, empathy, patience, impartiality. अगर counterparty को feel हो रहा है, वो emotional हो रही है, acknowledge करें. जी मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं आपकी जगह खुद को रखूँ, मेरे भी यही जज्बात होते हैं. I appreciate that. मैं आपकी बात आगे जरूर पहुंचाऊंगा. ठीक है? Without crossing the limit, without putting your institution in a bad light, try to acknowledge and empathize as much as you possibly can. Consider dealing with less emotional issues first. जो आपके काउंटर पार्टी दोनों के लिए या आप में से किसी एक के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल इशू है, उसको बाद में डील कीजिए. Let the other lesser emotional issues, the issues where you can agree to agree with each other, be focused first. Know your hot buttons and try to avoid them. हम सबके होते हैं, कोई ना कोई बात होती है. एक इंसान बड़ा सच्चा है, उसको कोई झूठा कह दे तो वो उनकी इमोशंस स्काई रॉकेट कर जाती है. तो हम इंसान हैं, हमें ये होता है, लेकिन बीइंग प्रोफेशनल्स हमें पता होना चाहिए कौन सी ये चीजें हैं जो हमें इमोशनल कर देती हैं और उनको हम कैसे अवॉइड या कंट्रोल करें. एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस. 100% कभी नहीं होगा. इट्स अ कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग प्रोसेस. द मोर यू कैन डू and the better of the two parties who is able to better control their emotions would drive the best results out of the process. So negotiators की personality types क्या होती है? There are 5 major types. Competitor होता है, whatever the cost may be, managing है, वही old school जो हमने बात की थी. Avoider, dislike conflict, negotiate करना पड़ेगा, what a crisis. No, it's an opportunity. Compromiser, fair-minded people interested in maintaining relationship. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर काउंटर पार्टी अगर अनफेयर हो तो they can take advantage out of such people. Accommodator, who resolves interpersonal conflicts by resolving the other person's problem. And problem solver, who seeks to find the underlying problem and use brainstorming to solve and create a win-win solution. So the best approaches are from bottom up. आपके सामने अब अगली 2 स्क्रीन्स पे प्रीटी मच सेम कॉन्सेप्ट है 2 डिफरेंट मॉडल्स के मुताबिक. आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लाइड पे आपके पास क्राइटेरिया है. सेटिस्फाई अदर, यानी आप कोऑपरेटिव हैं या नॉन कोऑपरेटिव हैं. सेटिस्फाई सेल्फ, आप असर्टिव हैं अपनी बात करने में या अनअसर्टिव हैं. अगर आप असर्टिव हैं और नॉन कोऑपरेटिव हैं तो आप कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं. You would either win or lose, nothing else. अगर आप unassertive है
और अनकोऑपरेटिव है तो आप विड्रॉ कर रहे हैं, ओह व्हाट अ क्राइसिस, आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट। अगर आप असर्टिव हैं और साथ कोऑपरेटिव हैं, अपनी बात भी आप इन अ पोलाइट मैनर बट फर्मली कम्युनिकेट कर सकते हैं इन एन इफेक्टिव वे, और कोऑपरेटिव भी हैं कि जो दूसरी पार्टी है उसके लिए आप वे क्रिएट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स कोलैबोरेशन, विन विन सॉल्यूशन। और अगर आप कोऑपरेटिव तो हैं, अगर आप कोऑपरेटिव होने के साथ अनफॉर्चुनेटली अनअसर्टिव हैं, तो आप दूसरी पार्टी को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि आप अनअसर्टिव हैं और आपकी प्राइम फोकस सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर है, तो इधर इशू ये होगा कि if the counterparty is not a fair party, you would end up capitulating and giving them more than they deserve. यही कॉन्सेप्ट जो है एक डिफरेंट मॉडल में आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसर्न फॉर रिलेशनशिप आपका कितना है, हाई, मॉडरेट या लो, और कंसर्न फॉर सब्सटेंस जो गोल है, हमने बात की थी दो चीजों को हम बैलेंस कर रहे हैं, गोल, रिलेशनशिप, मेंटेनेंस। इन दोनों को हमने दो अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस पे रख लिया, लो, मॉडरेट, हाई डिग्री पे। अगर सब्सटेंस के लिए आपका कंसर्न बहुत हाई है लेकिन रिलेशनशिप के लिए आपका कंसर्न बहुत लो है, तो you would want to be a winner at every cost and you would mostly end up being defeated. If your concern for substance is also low and you have no concern for relationship too, क्या मैनेजमेंट ने मेरी जिम्मेदारी लगा दी, what a problem, I was just a number cruncher, मुझे इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां दे दी, मेरे लिए तो क्राइसिस है, then you would just be withdrawing yourself. The result would be your organization and you professionally would lose out and the counterparty would take whatever they want to. If on the other hand, you have a high concern for relationship but low concern for substance, you'll try to build relationships and accommodate and end up losing more. But if you have a high concern for substance and a high concern for relationship, you'll try to collaborate, create problem solving, creatively solve the problem so both parties can win, win-win solution, which is the best proposition. And the middle ground is if you have a moderate concern for relationship and a moderate concern for the substance, your goals, then you'll try to compromise. अच्छा चलें दरमियान में आ जाते हैं, easy way out. Instead of difference क्या है, win-win, यानी collaborate और compromise में आप कह रहे हैं अच्छा चलें middle ground में आ जाते हैं। हो सकता है कि आपका right 2/3 बनता हो, ठीक है। कोलैबोरेट में आप क्या कह रहे हैं कि अच्छा मुझे ये 2/3 तो अचीव करना है, इसको कैसे मैं 2/3 तक लाऊं, कोई इसके लिए ट्रेडेबल मैं इसे ऑफर कर दे तो, कोई पार्टनरशिप ऑफर कर दे तो, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट कर दे तो, जिसमें उनको भी परसीव हो दे आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ इट। ये जो हमने सारी डिस्कशन की है, ये फ्लो चार्ट उसी को रिफ्लेक्ट करता है कि आप परसुएट करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, बैकअप करते हैं अपने पॉइंट्स को, यू हैंडल एंड देन सक्सेसफुली नेगोशिएट। दिस ब्रिंग्स अस टू मैनेजिंग टफ और डिफिकल्ट नेगोशिएशंस, जो हमारा एक बड़ा की पॉइंट था। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हमारे पास 3 मिनट्स हैं जिसमें आपके सामने एक पोल क्वेश्चन आएगा 1.5 मिनट, एंड देन विल ट्राई टू टेक सम क्वेश्चंस। हारून साहब प्लीज। आपके सामने पोल क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्रेडेबल, ये हमने डिस्कस किया है। पहली रिस्पॉन्स है अ स्टॉक आइटम टू सेल, सेकंड है समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर यू, और थर्ड है समथिंग दैट मे बी वैल्यूएबल फॉर द काउंटर पार्टी। सो अब आपने इस पे जो आपको सही लगता है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट दबाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। दिस इज जस्ट टू जज दैट यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग and critical for your verifiable CPD certificate. While people are voting, shouldn't we take up questions too? I think that people vote. Concentrate there. Yeah. Okay. It's a very difficult question. So is it? When you're looking at the answers, it seems that it's a very difficult question. सर अब आप अपने ऊपर ले रहे हैं ना, माशाल्लाह आप यहाँ पे मास्टर हो गया, आपने पहले भी प्रेजेंटेशन देख ली। About 20 seconds left. Come on, at least break the previous record. Last time 65% voted. इस दफा ब्रेक हो जाएगा इंशाल्लाह। Come on guys, vote. मेरी इज्जत तो रख लें। Just 1% more. Come on, go. Oh, there you Thank go. you. Okay. All right.
just slightly more than 2/3 voted, लेकिन 1/3 जो है उनको भी वोट करना चाहिए. हारून भाई, as always. Yes, the first option was a stock item to sell. I don't know why, but about 15% said that a tradable is a stock item. I know there are stock tradable as well, but that is why this item was created to actually differentiate. Exactly, all right. Number two is something of value to you. 11% said that that's a tradable, but 75% said that something that may be valuable to the counterparty. So option C is the right answer. You have mastered it. ये हमने बार बार बात की है. ट्रेडेबल नॉर्मली हम टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं जो स्टॉक होता है आप सेल करते हैं और इसलिए ऑप्शन ए डाली गई थी. लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेगोशिएशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, tradable is an item which may not hold critical value for you but is valuable for the counterparty. आपको याद है मैंने आपसे अपनी यूके की वर्कशॉप की एग्जांपल शेयर की, हमने कॉर्पोरेट एग्जांपल डिस्कस की, हमने पब्लिक सेक्टर ऑफिसर की. ट्रेडेबल क्या था? जो एक पार्टी के लिए वैल्यूएबल नहीं लेकिन उसकी काउंटर पार्टी के लिए. एनीवे, थैंक यू वेरी मच एंड आई अप्रिशिएट ऑल दोज हु पार्टिसिपेटेड. अरुण साहब, क्वेश्चंस? Yes. Okay, quite a few. So should we begin with the ones that were previously there? Abdul Wahab is saying, can you please share the list of upcoming CPD events that you will? Let me go to some relevant questions. Yes, Adil Jafar Ali is saying, what approach we should follow when we are negotiating with someone who has far more experience than you, or he's elder in age, which may be intimidating. जाफर साहब, फर्स्ट थिंग इज कि ये कंट्रोलिंग नर्व्स वगैरह ये हमने पहले डिस्कस किए, हैंडलिंग इमोशंस, इसकी टिप्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे. रिमेंबर वन थिंग, एज हैज नथिंग टू डू विद इट. ठीक है, हमारी ट्रेडिशन में यू रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड यू ऑलवेज शुड, बट बीइंग अ प्रोफेशनल अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करें, अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, आपके प्लान भी प्रैक्टिस मौजूद है, आप प्रैक्टिस करके गए हैं, आपके पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है, गोल्स है, अपनी रेड लाइंस का पता है, ट्रेडेबल्स है, वैल्यूएबल ऑफर्स आप क्रिएट करके गए हैं, प्लान भी क्रिएट करके गए हैं, और इम्पोर्टेंटली अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्टिवली लिसन कर सकते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन यूज करके इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, यू शुड बी एब्सोल्युटली फाइन. नेक्स्ट. Okay. Suhail Muttaqi is saying, please put the recording of this lecture and provide the presentation by email. That's exactly what we always do. This recording will be available on Vimeo and the presentation will be emailed to you. Congratulations, Suhail. I think you have joined us for the first time, so it's good to have you here. Vikas Askar is saying how to negotiate with a boss who thinks you're not skillful enough to handle an audit client. I think this question has been asked in another way in the past, so if you could make it. Hold on to this. Let us finish the presentation first. And in the last question answer session of the day, ask me this if you are still unsure. Mohinder Kumar, although he's not here anymore, he's left, but he's asked a pertinent question. Normally in an audit firm, we used to face such questions that you don't have relevant experience. How to cater such problems? As they want to hit you at the minimum wage, regardless of your experience and knowledge. I think that's negotiation. It's the same concept कि आप effectively negotiate कैसे करते हैं. देखिए बात वही है, वो भी आपसे negotiate कर रहे हैं, and this is a classic example of effective negotiation by them. अब आपने prepare होके जाना है, वो आपको क्यों बुला रहे हैं, आपकी उनके नजदीक क्या वैल्यू है, उनको पता है आप क्यों आ रहे हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मार्केट रेट्स क्या है. दे आर प्रिपेयर्ड. प्रॉब्लम क्या होती है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. जब आप प्रिपेयर होके जाएंगे और अपनी वैल्यू को आप इफेक्टिवली प्रोपेगेट करेंगे. अच्छा, मैं आप लोगों से शेयर करके दूं, आई नेवर शेयर्ड दिस पब्लिकली. In my first job, I got promotion within one month. Within one month. Normally आपका annual review होता है. In my last job, when I came to Pakistan, I got promotion within 2.5 months, and I was at the most senior position while I was 24. So when I'm telling you these things, believe me, they work in practice. Just follow them up. Next. Okay.
problem, voice problem, connectivity issue. Somebody is saying you should ask more poll questions because of importance of work. I won't be able to attend the entire session. And need the CPD certificate, right? We will be asking a few more questions. Okay. But I like the honesty. That's commendable. Okay. Harun sir, is it necessary to be online during tea or lunch break? No, it's not. The break is very much for you to get yourself freshen up. Any CPD events coming in Saudi Arabia? We will let you know, Umar Hussain. All right. Raza Nayani is asking. Umar, we have to go to Saudi Raza Nayani is asked an interesting question. Says, I'm trying to negotiate with a Chinese supplier. They are a big company and I'm a small buyer. How do I negotiate in price? I know there is room. Raza, first things, Chinese are brilliant at negotiating. I work with Chinese. Normally the concept is about a certain other nation, but let me tell you, Chinese are the best at negotiation. And why they are best? They follow all this. They are almost always absolutely prepared. On average, exceptions are there. They handle their emotions brilliantly. They'll be like, high score, you wouldn't be able to get much out of them, what they are thinking, what they are going to do. They would be reading your body language perfectly well. They'll be using leading questions to get information out of you. You have to do that same thing with them. You have to be prepared. See why they want to work with you. What is the incentive, additional business? If you know there is room, you can quote that in a very diligent way. Use effective probing questions. Use leading question to lead them to come to that point themselves rather than feeling that you are putting that in their face. So by using all these things effectively, you can. We used to negotiate with people from different regions, and let me tell you, the most challenging negotiation was always with our Chinese counterparts. But they are also humans. If you follow all these things, practice them effectively, you can still get out of it. Just focus on what we are about to cover. This is perhaps the most important section of the day, and inshallah you'll be in good shape. Next. Muhammad Amin is asking how to negotiate with those who know all these strategies and are experienced enough. By making yourself experienced enough. Look, there's no replacement to practicing, to gaining experience. But remember one thing, there is a natural law. With experience, on average, exceptions are there. The passions start cooling off or dying down. There are some exceptions where this is not the case, but normally that's the case. So you can use that thing. Normally the people who are experienced enough are overconfident. If you know you are not experienced, maybe that can work in your benefit, that you would be more cautious to actually follow these things. Experienced or non-experienced, if you follow all these things, they would work. अपने बारे में अच्छा सुनना किसको बुरा लगता है? मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन आप आके खुशामद की बजाय एक जेन्युइन तारीफ करते हैं ना, सर उमर माशाल्लाह मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, ये इस एज में आपने इतनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ऑल दीज थिंग्स, मैं आपको चाहे ना भी कहूँ, आई विल फील गुड, आई एम अ ह्यूमन, यू वुड आल्सो फील गुड. खुशामद नहीं, जेन्युइन पॉजिटिविटीज, इन सारी चीजों को फॉलो करें, रिजल्ट वुड बी पॉजिटिव. अगेन डिटेल से हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट. Very quickly, how to negotiate? ये हो गया. How to identify what is important to the other party and is it cheap for you? By getting prepared. देखिए अब तो सबसे बड़ा हमारे पास एडवांटेज है, डिजिटल एज है. आपके पास डिफरेंट मीडियम्स मौजूद हैं जहाँ पे आप अपनी काउंटर पार्टी के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. मे बी आपके कोई दोस्त उनसे डील कर रहे हैं, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. मे बी यू हैव अ फ्रेंड वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हु कैन हेल्प यू. इफ नथिंग एल्स, सोशल मीडिया तो आपके पास मौजूद है, सर्च इंजन मौजूद है. सो यूजिंग ऑल दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ. अब तो बहुत आसान हो गया, पहले ये चैलेंजेस ज्यादा शदीद होते थे. नेक्स्ट. There are too many people asking how to negotiate salary. Exactly. Salary. I thought that would happen. So, इसको हम एंड में ही करेंगे, आप लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहेगा. Yeah. Usman Ayaz has a very strange request. He says,
unlike all others, he says, please hold these seminars on weekdays rather than weekends. Usman, if you allow me, I would like to answer that. Usman, आपको ये पता है कि जब हारून साहब की मेरी डिस्कशन हुई और इन्होंने पहली दफा मुझे सैटरडेज का कहा, मैंने इनसे कहा मेरी संडे को भी कमिटमेंट होती है, एक ही दिन तो फारिग है, लेकिन मेंबर्स का ओवरवेलमिंग रिस्पांस ये था कि ड्यूरिंग वीकडेज नाउ, रीजन बीइंग कि ड्यूरिंग वीकडेज मोस्टली इंगेज होते हैं या स्टडीज में या मोस्टली जो प्रोफेशनल्स हैं अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में, तो इट वाज ऑन मेंबर्स रिक्वेस्ट एसीसीए टीम का भी सैटरडे ऑफ होता है, हारून साहब अहमद बिलाल अपनी छुट्टी ऑफ करके आते हैं, वी आल्सो कोलैबोरेटेड ऑन दैट, सो बट इफ मेंबर्स वांट दैट, हमें तो बहुत खुशी होती है, दैट्स परफेक्टली फाइन, इफ यू कैन गिव योर गार्डनर इनफ सपोर्ट वी वुड लव टू डू दैट, बट एट प्रेजेंट overwhelming majority request this to happen on Saturdays or weekends. Next. There was a question about lying while negotiating, which is about ethics. I think that's a very important question. If you could share how important ethics is when you're negotiating officially. देखिए इस चीज को हमने पहले भी डिस्कस किया है. Being a Muslim, we know things. Being a professional, we know ethics. लेकिन अगर आप प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना चाहें ना, तो देखिए देयर इज अ स्ट्रेंज मैकेनिज्म. अगर आप किसी के साथ झूठ बोलना चाह रहे हैं, लाई करना चाह रहे हैं, डिसीव करना चाह रहे हैं, कुदरत का मैकेनिज्म ऐसा है, दे वुड फील दैट, यू कांट हाइड दैट. अभी मैंने आपसे शेयर किया डिफरेंट स्टडीज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वाइब 60 to 80% कम्युनिकेट कर देती है. आप एक लफ्ज ना बोलें, द अदर ह्यूमन बीइंग वुड फील व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू विद देम. रिएक्शन क्या होगा? यू वुड ऑल्सो गेट अ नेगेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देम. ठीक है, यू वुड नॉट सक्सीड. बहुत हो सकता है अगर आप किसी ऐसी पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में है कि टेम्परेरीली आप प्रेशर एक्सर्ट करके, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट करके कोई अपना शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लें, बट बिलीव मी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका ब्रेक डाउन होगा और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आप उसको भी लूज करेंगे, अपने गोल्स भी लूज करेंगे और आपकी ये रेप्यूट बिल्ड हो जाएगी जो इंडस्ट्री में ट्रेवल करेगी. ओके, दैट पर्सन इज अ लायर, इस पे रिलाई नहीं कर सकते, ये झूठा है, आपके सामने बात नहीं करेंगे. इट्स नॉट वर्थ इट. आप अगर पॉजिटिवली जो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं उनको लेकर चलें, पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें, प्रॉपर्ली आप प्रिपेयर हो, अगले शख्स के लिए कंसर्न हो, अपनी डेडलाइंस को क्रॉस ना करें, अपने वाइटल गोल्स के ऊपर फोकस करें, लेकिन उसके साथ अगर आप विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं काउंटर पार्टी के साथ, कंपटीशन की बजाय पार्टनरशिप की तरफ जाएं, एक्सीलेंस की तरफ जाएं, जो बेहतर काम आप कर सकते हैं, you would almost always end up generating more value, not just for them but for yourself. आपकी repute personally भी build होगी और career में भी आप आगे progress करेंगे. Next. All right. Can I just add a few more things here? I am very keen. I normally very keenly observe body language, and assessing or interpreting body language is a science in itself. True. So just some indications to the participants to assess or to find out if a person is lying. There are a few indications. If the person is avoiding eye contact, that's one indication of somebody lying. Sure. If the person is touching his or her nose repetitively during conversation, that's an indication of lying. If a person is usually looking to the left during this conversation, he's not looking towards you, he's not looking to the right, upar niche, looking to the left is also an indication that a person is lying. So if you read psychology, it's all given there. So how do you assess through body language that the person is lying or not? I'm very impressed. We have a section dedicated to this stuff. I didn't know you had such a command. All right. Very quickly, Hunain has asked an excellent question. Says, negotiation skills, do they depend on emotional intelligence? Handling your emotions is perhaps most critical in becoming a successful negotiator. So yes, it is a vital part of that. How effectively you handle your emotions. Next. Nabil Tahir is saying, can we say generally that accountants are not good negotiators because they have to do it as per defined rules? Some people say that. I don't subscribe to the idea. The thing is, no matter how limited a scope you have, if you follow all these things, if you are good at it,
you can still be a successful negotiator within that area. We have, I don't know when you joined this session, it started at 3, and we have discussed real life examples when people in a very limited scope, be in public, be in corporate, or other small SME sector, or even in multinational, worked out to effectively negotiate. I'll try to refer to them again later next. Okay. Next is, all right, I just did. Suhail Mushtaq saying, can you please provide some tips with respect to body language of the negotiator? There you go. You got them. Next. All right. Gibran Ahmed saying, sorry to say, but today's whole, because of sound issues, the session is not as so smooth. Sorry about that, Suhail. There were some issues, technical issues. Our technical team worked very effectively to fix them. The good news is you will have the recording available on Vimeo, so that will compensate. Next. Sorry, Hunain, once again, please mention the power of emotional intelligence in negotiation. We just answered that. Okay. Negotiation, I think we're almost through. Just this last question says, really appreciate that in the end you would discuss the negotiation power of ACCA members in the Pakistan job market. Interesting. Sure, why not? When we are going to go through the last segment of opportunities that effective negotiation can bring up for accountants, that's an area where we touch on. So, going back to the presentation and the topic of the day, managing tough and difficult situations. So this has been a very important question. What if the counterparty is intimidating? What if they hold the power? What if they are manipulative? If they are in a monopolistic position? And all those scenarios. Let's find out. Traditionally, negotiation was viewed as an adversarial or confrontational process. To talk tough and see who blinks first. A war of nerves. Not anymore. We have discussed that. The negative attitude is outdated. It has to be a balancing act between maintaining relationship, building them, and trying to achieve your critical goals. You have to create value and use Tradable to strive for a win-win solution. And in doing so, the principles of fairness, seeking mutual benefit, and maintaining a relationship are keys to a successful outcome. मैं आपसे शेयर करता हूँ समटाइम इतनी सिंपल चीज होती है इंसान सोच नहीं सकता लेकिन इतना इफेक्टिवली वर्कआउट करती है एक हदीस पाक है जिसमें ये फरमाया गया है कि अपने मुसलमान भाई के लिए वही चाहो टू द नियरेस्ट इफेक्ट जो तुम अपने लिए चाहते हो पुटिंग योरसेल्फ इन समवन्स शूज अगर आप सिर्फ इसको ही इफेक्टिवली कर रहे हैं ना सिर्फ इसको ही कर रहे हैं यू आर अ बिग वे टू बीइंग एन इफेक्टिव नेगोशिएटर क्यों यू बिकम एम्पैथिक you become passionate, you become caring, the other person feel that, you try to create value then. So these sare principles isme embedded hai. And when you actually do them, the result is almost positive. Always. Negotiation is not just about achieving your desired outcome at any cost, but also about building, maintaining and improving relationships. As we discussed before, you should try to negotiate, as you can see in the picture, to achieve a win-win solution. Following are highly effective in tackling difficult persons and difficult negotiations. First of all, know the legitimacy and merit of your case. आप जो चाह रहे हैं किस वजह से चाह रहे हैं इसमें आपके क्या merits हैं क्या strength हैं they would give you a sense of strength और plus जहाँ पे आप weak होंगे आपको idea होगा ये मेरे weak points हैं I need to address them. Second, be confident in presenting it. Even if you have the best case in the world, if you can't present it confidently, it's nothing. Show courtesy to the other party. Courtesy in your behavior, in how you deal with them, in your mannerism. Courtesy का मतलब ये नहीं है कि जी मैं अपने सारे objectives खत्म करके सिर्फ आपके मांगता हूँ. ठीक है? Adaptation to the other party's style. जो उसका स्टाइल है उसको रेसिप्रोकेट करें ताकि वो कंफर्टेबल फील करे आपके हक में ये जाएगा अगर वो कंफर्टेबल आपकी वजह से फील करेगा build rapport try to build a relationship make them feel comfortable with you use Tradable जो हमने बात की but only in a reciprocal situation ये ना हो कि आप Tradable देते जा रहे हैं अगला reciprocate नहीं कर रहा you have to first assess by listening using pointing questions trying to lead them
and try to bring them to a situation where they offer the tradable first, or at least share a desire to have a tradable, so that you can have a reciprocal arrangement. One way traffic नहीं होनी चाहिए. Research the bigger picture. ये जिस चीज को आप कर रहे हैं, in the wider scheme of things कैसे बिल्डिंग होती है, दोनों इदारे के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स क्या हैं, पार्टनरशिप्स क्या जा रहे हैं, ये स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ पे आता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. वेरी इंपॉर्टेंट. कंट्रोल योर इमोशंस एंड बॉडी लैंग्वेज. जैसे हारून साहब ने आपसे जिक्र किया, जितने भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज नोट कर रहे होते हैं, और जो नोट नहीं भी कर रहे, देयर आर वाइब्स. अब तो साइंटिफिकली प्रूवन है, पीपल गेट वाइब्स फ्रॉम ईच अदर विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, try to work towards a win-win solution. आप इन सारी चीजों को फॉलो अगर करें, you can almost tackle any kind of difficult negotiation situation. अच्छा, ये तो हो गई बात हाउ टू टैकल डिफिकल्ट नेगोशिएशन. हमने पहले बात की थी कि डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स क्या होती है नेगोशिएटर्स की, लेकिन एक इफेक्टिव नेगोशिएटर को होना कैसे चाहिए. एन इफेक्टिव नेगोशिएटर शुड बी पोलाइट बट फर्म. जो मैंने बात की, आप बात कर रहे हैं पोलाइट मैनर में, लेकिन अपने स्टैंड पे आप फर्म है. देखिए, ये जो हमने आपको रेट दिया है मार्केट से ऑलरेडी 10% कम है. दिस इज द बेस्ट रेट. हम आपको ये दे रहे हैं बिकॉज वी एक्चुअली वांट टू पार्टनर विद यू. हमारा ये फ्यूचर प्रोजेक्ट भी लाइंड अप है जिसमें हम आपके साथ ही पार्टनर करना चाह रहे हैं. बट अगर हम इस रेट से कोई नीचे जाते हैं तो इट वुड स्टार्ट ईटिंग इन आवर मार्जिन्स, जो हमारी इस फ्यूचर पार्टनरशिप को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है. पोलाइट बट फर्म, एड्रेसिंग देयर कंसर्न. मैं ये नहीं कह रहा मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, मैं कह रहा हूं आपके लिए फ्यूचर में है, आपका फ्यूचर बिजनेस इफेक्ट होगा. एड्रेस दी अदर पर्सन्स कंसर्न. साइकोलॉजिकली ह्यूमन नेचर ये है कि उसको अपने बारे में इंटरेस्ट होता है. इट डजंट मैटर हु द पर्सन इज. आप अगर उसके बारे में, उसके इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, द काउंटर पार्टी वुड ऑलवेज बी मोर रिसेप्टिव. कॉन्कर योर फियर्स. अगर आप किसी बोर्ड रूम में जा रहे हैं, किसी नेगोशिएशन सिचुएशन में जा रहे हैं और ये सोच के जा रहे हैं मैं फेल हो जाऊंगा, क्या हो जाएगा, तो आप होंगे. ठीक है. यू फर्स्ट हैव टू कॉन्कर योर इमोशंस. उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट लोगों को सूट करते हैं. आपका कोई सिबलिंग है, आपका लाइफ पार्टनर है, कोई जिससे आप कंफर्टेबल है, दोस्त है, उनके साथ प्रैक्टिस कर लें. कोई अवेलेबल नहीं, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें. तो राइट डाउन ऑन अ पेपर आपके फेयर्स क्या है, आर दे रैशनल और नॉट. Conquer them. But when you do actually go in a situation where you are negotiating, you should not express or feel any fear there. अब मैं यहाँ पे एक चीज शेयर कर देता हूँ कि I once read this in our Islamic texture कि Almighty says कि whatever you expect from me to the nearest effect, I make it happen. When you are fearing and expecting failure, that will happen. So be confident. Even as a professional, we know the extreme importance that confidence can bring to the table to ensure your success. Control your emotions. Avoid personality clash. Humans हैं, they are bound to happen. But being a professional, आपका और दूसरे का डिफरेंस ये होगा कि कितने इफेक्टिवली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. Focus on principles rather than positions. बहुत इंटरेस्टिंग है. क्या मतलब है इसका? Quickly. आप लोगों के पास 15 सेकेंड्स हैं फीडबैक के लिए. क्या मतलब है फोकस ऑन प्रिंसिपल्स रेदर देन पोजीशंस? Try to be flexible. Good. And anyone else? Not on gestures. Focus on what is right. Okay, and don't lose your ethics. Fair enough. Good points, all of them. लेकिन यहाँ पे इससे मुराद ये है कि जो अंडरलाइन गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की रेड लाइन डिफाइन करते हैं. जो आपकी मेयर पोजीशन है वो नहीं. मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, आप निगोशिएट कर रहे हैं कि आपने मार्केट के बेस्ट रेट्स लेने हैं. ये आपके अंडरलाइन प्रिंसिपल है कि आपने मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होना है. अब पोजीशन क्या हो सकती है कि आप कह रहे हैं 30% और मार्केट में बेस्ट आपको 28% मिल रहा है. अब आप उसके ऊपर फोकस कर जाए, मैंने तो 30% ही लेना है. आपका अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या था?
कॉस्ट लीडर होना है, आपने पूरी मार्केट देख ली है, इससे बेहतर आपको नहीं मिल रहा. सो इफ यू फोकस ऑन प्रिंसिपल यू वुड बी एबल टू बी मोर अकोमोडेटिंग एंड बी मोर रियलिस्टिक. याद रखें हमने शुरू में बात की थी कि आपके गोल्स जो हैं वो एक्चुअली अटेनेबल और रियलिस्टिक होनी चाहिए. ऑल दीज थिंग्स टाई अप टुगेदर. डोंट कंप्रोमाइज ऑन योर रेड लाइन्स. कुछ आपकी एब्सोल्यूट रेड लाइन्स होंगी. फॉर एग्जांपल सैलरी हो रही है, एम्प्लॉयर आपको कहता है कि जी आप मुझे 20,000 महीने का देके मेरे साथ काम कर लें, ये आपकी रेड लाइन है, आप नहीं कर सकते. सैलरी की बहुत ज्यादा बात हो रही थी ना. बट ऑन अ सीरियस नोट, फॉर एग्जांपल आप कॉर्पोरेट नेगोशिएशन कर रहे हैं, बाय सेल सिचुएशन बहुत कॉमन होती है, आप सीएफओ है, आपने ऑथोराइज करना है, तो आपको पता है कि ये मैक्सिमम कोट है जहां तक मैं जा सकता हूँ, इससे ऊपर मैं जाऊंगा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी एडवर्सली इफेक्ट होगी. यू कांट क्रॉस दैट. रेड लाइंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज दे हेल्प यू टू प्रिपेयर अ प्लान बी, कि अगर निगोशिएशन में ये सिचुएशन आए कि रेड लाइन क्रॉस हो रही है तो उसको वहीं पे फ्रीज करके मैं अपने प्लान बी पे शिफ्ट कर लूं, मेरे पास ऑल्टरनेट क्या हो. दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी ये हेल्प करती है कि ड्यूरिंग निगोशिएशन में क्या ऑफर कर सकता हूं और क्या ऑफर नहीं कर सकता. व्हाट आर द क्रिटिकल गोल्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज कीप द नेगोशिएशन चैनल ओपन. प्रोसेस को ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, प्रोसेस चलते रहना चाहिए. अगर वो अनबियरेबल लेवल पे पहुंचे, लीव इट ओपन एंड फ्रीज इट आउट, मूव आउट ऑफ इट, बट डोंट ब्रेक द रिलेशनशिप, बिकॉज इफ यू बर्न द ब्रिजेस द कॉस्ट, एज आई मेंशन्ड बिफोर, ऑफ रीबिल्डिंग इट वुड बी हैवियर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट. हमने अभी बात की थी कि जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं उसमें लिसनिंग, क्वेश्चनिंग और बॉडी लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल है. We'll begin with questioning skills and its importance. Neil Postman once said, all our knowledge results from questions, which is another way of saying that questioning is our most important intellectual tool. Ability to ask and answer question is almost always central to effective negotiation. In fact, सुकरात जो है उसने आज से कोई 21-2200 साल, रफली 2000 साल पहले ये कहा था कि निगोशिएशन या कम्युनिकेशन जो है इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एरिया इज क्वेश्चनिंग. लेकिन मॉडर्न निगोशिएशन स्किल्स में लास्ट डिकेड में ये रियलाइज किया गया और इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है कि आप कैसे क्वेश्चनिंग को यूज कर सकते हैं इफेक्टिव निगोशिएशन के लिए. क्वेश्चनिंग की दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, क्वेश्चन की टाइप्स और क्वेश्चनिंग स्किल्स. वी आर गोना कवर देम बोथ. क्वेश्चनिंग टाइप्स में क्लोज क्वेश्चंस. क्लोज क्वेश्चन क्या है? जिसका जवाब यस नो में मिले. फॉर एग्जांपल आप किसी को कह सकते हैं आप 12% पर सेल करें या नहीं, आप 10% लेंगे या नहीं, आप ये मान रहे हैं या नहीं. क्लोज क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड सिचुएशंस में इफेक्टिव हो सकते हैं. जैसे अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग समझना चाह रहे हैं, आपका मतलब यही था, हाँ जी आपने यही कहा, वहां तो ये इफेक्टिव हो सकते हैं एंड फ्रॉम सेटिंग फॉर सेटिंग अ फ्रेम. लेकिन अदरवाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्लोज क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अगर आपको नेगेटिव आंसर मिल जाए तो बहुत मुश्किल होता है कम्युनिकेशन को वापस ट्रैक पे लाना और निगोशिएशन को रिवाइव करना. फनल क्वेश्चंस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है. दे स्टार्ट विद जनरल क्वेश्चन एंड देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द रेलेवेंट पॉइंट इन ईच आंसर, ड्राइविंग मोर एंड मोर डिटेल आउट ऑफ द आंसर्स. They can be very effective if used properly. For example, आपने बात शुरू की, काउंटर पार्टी ने एक जवाब दिया, उसने जो जवाब दिया उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है and you use and build on that. These are funnel questions. One of the more effective type of question is open question. Open question क्या है? जिसका yes no में जवाब ना दिया जा सके, लंबा जवाब दिया जाए. For example, अच्छा आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तो आप क्या प्रपोज करते हैं, अच्छा इसको हम कैसे करेंगे. ओपन क्वेश्चन का फायदा क्या होता है कि काउंटर पार्टी को अपना थॉट प्रोसेस ओपन करना पड़ता है, आपसे शेयर करना पड़ता है, स्पीक अप करना पड़ता है एंड यू गेट मोर इंफॉर्मेशन. These are effective for developing a conversation, finding out more details and finding out the other person's opinion or issues. What you, for example, what do you propose would be a better way to reach a consensus between us? See, questions like these. चलें, so far so good. ये तो मेजर टाइप्स हो गई क्वेश्चनिंग की. अच्छा मैं यहाँ पे ये चीज शेयर कर दूं कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है. इफेक्टिव निगोशिएशन के ऊपर डिफरेंट कॉर्पोरेट इदारों में हमने डेज लॉन्ग और इवन वीक्स लॉन्ग सेशन किया है. जब हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है तो हमें स्कोप उसके अंदर सेट करना होता है.
कि इस टाइम के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट तरीन एरियाज हैं जिनको हम कवर करें, और यही स्कोप हमने ट्राई किया है कि आज के दिन में जो हमारे पास टाइम है उसमें एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल हम आपको मैक्सिमम नॉलेज डिलीवरेंस करें. सो कैरिंग ऑन, प्रिंसिपल ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है? यूज बोथ फैक्चुअल एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन. फैक्चुअल हो और अगली जो आपका काउंटर पार्टी है उसके थॉट प्रोसेस को वो इवॉल्व करें, कि वो सोचना शुरू करें, शेयर करना शुरू. ओपन क्वेश्चन है, फनल क्वेश्चन. आस्क सिंपल and extracting question to get information. Use open question to encourage larger responses and get detailed responses. Use funnel questions to bring your point across in a manner which is not confrontational. अगले को यही लगे कि ये तो मेरी ही बात हो रही है, आपका पॉइंट वो अपने मुंह से बोल रहा हो. That is your success. Use probing and reflective question. Questions must be guided by definite aims. Endlessly for the sake of it गपशप नहीं करें. जब आप जा रहे हैं यू शुड बी प्रिपेयर्ड. आप एक सवाल कह रहे हैं, उसका मकसद होना चाहिए. आप किस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं, आप क्या उसमें से रिस्पॉन्स ड्राइव कराना चाह रहे हैं. डोंट आस्क क्यूड क्वेश्चंस. क्यूड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसमें आप कोई क्लू देना चाह रहे हैं. क्यों? ऑफन पार्टीज परसीव कि अच्छा ये हमें डायरेक्ट करने की कोशिश होती है. एग्जांपल मेंशन है क्यूड क्वेश्चन की, ओह यू हैव नो इशू विद दैट, डू यू? सो इफ देयर इज अ यस आई डू, then it's a type of closed question, and once with a negative tone you are trying to lead them. So don't do that. That can actually backfire. Instead, if you want to do such a thing, use funnel questions, जहां पे काउंटर पार्टी उसको इस तरह बोले कि उसको लगे कि ये तो उसकी अपना थॉट प्रोसेस है. अच्छा हमें इसको कैसे करना चाहिए? देखें जी, आप 30% डिस्काउंट कह रहे हैं, वो तो बहुत मुश्किल है. हम मार्केट में 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, आपसे लॉन्ग टर्म के लिए हम 12% कर देंगे. Oh, अच्छा आप हमारे लिए 2% एक्स्ट्रा करेंगे. We really appreciate that. We were thinking of expanding और we were looking at economies of scale. तो उस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि how can we partner? हाँ, if we talk about volume, perhaps we can look at better rates. Let me talk with my CFO. Let me call him, see what the stats say. See, इस वे में आप करें कि आपकी बात काउंटर पार्टी अपने मुंह से करे और उसको लगे ये उसका थॉट प्रोसेस है. Put same question in a different manner to multiple persons in the counterparty team. अगर टीम नेगोशिएशन हो रही है, एक सवाल डिफरेंट अंदाज से आप वहां टीम काउंटर टीम के डिफरेंट लोगों से करें, यू आर लाइकली टू गेट, जिसको हम कहते हैं ना आर्मर में जो लूज चेंक होता है, जो आपको हेल्प कर सकता है आपके नेगोशिएशन प्रोसेस में. इंश्योर ऑडिबिलिटी, अगला आपकी बात सुन सके. अगर उसको समझ नहीं आया, वो कह रहा है क्या, तो इरिटेट ना हो, रिपीट करें इन अ नेगोशिएशन सिचुएशन. वाई? कम्युनिकेशन है, आपका पर्पस ये है कि आपकी बात अगले को समझ आए. अगर आपका इंग्लिश का एक्सेंट है, आई यूज्ड टू हैव वन व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, उसको चेंज करें, इस तरह बोलें कि अगला आपकी बात समझ सके. आपने ये देखा होगा कि जितने आपके ये न्यूज चैनल, टेलीविजन, इंटरनेशनल हैं, इनके ऊपर वो इंग्लिश इतनी कंफर्टेबली और इजीली बोलते हैं कि हर एक को समझ आए. और जो भी पब्लिक स्पीकर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो एक एक लफ्ज इतने वाज़ेह अंदाज में बोले कि लोग समझे. सेम प्रिंसिपल अप्लाइज इन इफेक्टिव नेगोशिएशन. अगर अगला आपकी बात सुन नहीं सकता तो वो रिस्पॉन्ड भी नहीं प्रॉपर्ली कर सकता. इफेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं? इफेक्टिव क्वेश्चंस वो होते हैं जो क्लियर हो, मीनिंगफुल हो, लेकिन ब्रीफ, कहानियां नहीं हो लंबी. They should be purposeful and thought-provoking and actually focused on the goal and objectives and adapted to the audience you are addressing. My personal favorite, body language and its importance in negotiation. I think we'll take a few questions. Do we have any? First we have a poll question and then we'll take your questions. Poll question comes up now. Okay guys, you have the poll question in front of you. The poll question is, what is most important? 1, questioning. 2, body language. Or 3, arguing. इसको हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन it doesn't matter, right wrong answer is not the purpose. The purpose is to see your engagement. आप attentive हैं. The more people respond, the better. आपके verifiable CPT units are dependent on it. Meanwhile, आप जितनी देर आंसर कर रहे हैं पोल क्वेश्चन, ये जो हम मॉडल्स, थ्योरीज पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, they are not the end of the world. There might be a few different versions.
There is no absolute wrong or right here. अगर आप पढ़ें, सर उमर ने तो कहा था स्मैक गोल होने चाहिए, ये तो स्मार्ट भी हो सकते हैं. Don't be worried. Yes, smart भी हो सकते हैं. Purpose वही है. We have chosen the content we believe is best possible, practically adaptive, and of more value to you that we are delivering you within the limited time that we have available. So with that, we have like almost 15 seconds left. और क्या हुआ? Voting proportion गिर गई. Come on guys, vote quickly. Sir, 15 seconds और दे देते हैं. मैं बात कर रहा था, तवज्जो डिस्टर्ब हुई है. Okay guys, Harun Saab has very kindly agreed. You have 15 seconds more now. Please, देखें, just respond करें. It doesn't matter right or wrong. Select the option submit. यहाँ हम किसी का नाम नहीं लेते और मैं बिल्कुल नहीं देखता किसने सही जवाब दिया किसने गलत. So you are not judged. The time is up. Okay. Sorry. Not a problem. G. All right. The answers. I think this was a slightly trickier question. It was. Because between the three options, I think it was very, very close. 26% have said that questioning is the most important. Mm-hmm. That indeed it is. Mm-hmm. But 74% said that body language is even more important. Only 1% said that arguing is important. Thank you very much. Okay, on a lighter note, किधर आप रशिया से फ्लाइट अच्छा, we have discussed this repeatedly कि ये जो arguing वाला है ये ex Soviet era के जो scholars थे during Cold War वो इसको propose करते थे. In modern era even Russians भी इसको नहीं अब agree करते, follow करते. So arguing तो बिल्कुल नहीं है. बाकी दोनों में से कौन सा है? जवाब देने से पहले हम देखते हैं हारून साहब क्या कहते हैं. मेरे ख्याल है body language is more important than questioning. But I can't distinguish between the two. You are right. Questioning is equally different. Questioning is important. However, I shared with you before that your 60 to 80% communication is your body language. If you are effectively questioning, that is icing on the cake, helping you achieve the goal. लेकिन अगर आप effective communication कर रहे हैं और body language आपकी बिल्कुल खत्म है, तो 60% ground तो आप वहीं पे lose out कर रहे हैं. I agree, it can be questioned, but the way we have discussed and structured it, well done to all of you who participated. You participated. The right answer was B, body language. Now, can we have some questions? Sure. And congratulations. आपके सारे poll questions सही हो गए. All right. Hassan Rafaqat is asking if a person is ethically wrong, then even if he is president of Pakistan, he is ethically deviating from principles. I think that's a comment more than a question. Thank you for sharing the observation. Goman Zia is asking how to negotiate with a senior having less knowledge as compared to us. हरमगान बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वही बातें जो हमने पहले की. Be polite, be considerate, follow all these principles. Don't be like put it in your face. आपको नहीं पता ये ऐसे होता है. मैं. एक तो अपनी कम्युनिकेशन में I जो लफ्ज है ना, इसको अवॉइड करने की कोशिश करें जितना भी आप कर सकते हैं. बहुत मुश्किल होगा. कोशिश कीजिएगा. आज एक ईमेल लिखने की कोशिश करें, देखें कितनी दफा आई आता है. पहले तो आई को अवॉइड करें. दूसरा, आपने जो आपके सीनियर हैं उनको ड्यू रिगार्ड देकर उनके पर्सपेक्टिव की बात करनी है. अगर उनको ये फील होगा आप फनल क्वेश्चन यूज करते हुए उनसे वो बात ड्राइव आउट कर रहे हैं while your body language is respectable, he won't be offended. If you are not doing that, you are trying to use close questions or trying to put it in his face while your body language is saying, मेरे से सीनियर बैठे हैं, पता आपको कुछ नहीं, सारा कुछ मुझे आता है, तो obviously फिर reaction भी वैसा ही होगा. Next. Zahid Raza is saying, why have we not given prayer for namaz? This is, break for namaz. This is a sensitive question I would want to answer. लाहौर में नमाज के टाइमिंग डिफरेंट होते हैं, कराची में डिफरेंट होते हैं, इस्लामाबाद में डिफरेंट होते हैं. हम अगर एक टाइम नमाज की ब्रेक देंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. We will not stop anyone from praying. नमाज के लिए जिन साहब को जाना हो वो प्लीज अपना सिस्टम बेशक म्यूट करके या ऑफ करके चले जाए, वापस आके दोबारा ज्वाइन कर लें. We do not normally assess people on the time of or the duration of their having joined the session. Now we rely more on poll questions.
तो नमाज के लिए ब्रेक खुद ही ले लिया कीजिए, हम स्टॉप नहीं करते, लेकिन हम एक फिक्स टाइम फिलहाल नहीं दे सकते, हम फॉर अ वेरी ब्रीफ सेशन वेरी इंटरेस्टिंग. What we can do, however, is कि for next 10 minutes we won't ask the next poll question. तो अगर आप में से कोई चाह रहा है तो वो नमाज पढ़ के आ सकते हैं. और next session, however, is very important. या हम ये कर सकते हैं कि after 10 minutes हम एक poll question ले लें, which would be the second last of the day or last one. और उसके बाद for 10 minutes we won't ask any poll question. फिर एंड ऑफ सेशन पे हम पोल करेंगे. तो लाइक आफ्टर 10 मिनट्स यू वुड हैव अ 10 मिनट्स फ्रेम जहां पे आप नमाज पढ़. एग्जैक्टली. नेक्स्ट. My second question is, this is Usman Ayad saying, I need to know the presenter's profile. I must say he's great in delivering very important content and information to the students. And the best thing is that he's delivering in English as well as in Urdu, which is very helpful for many. Urdu needs to be promoted for all such events and it helps get the content very easily and effectively. I hope this element will be motivated in future webinars as well. Thank you very much for the wonderful compliment. Highly appreciated. I shared my profile in the beginning. आपको presentation आएगी, वहाँ पे भी share होगी. अगर आप देखना चाहें तो आप Google कर सकते हैं उमर ज़हीर मीर. WordPress पे मेरा blog है omerzahirmwer.wordpress.com. Regarding communication, इसका रूल ये होता है कि उस तरह करें कि attendees को समझ आए. बट इसका क्रेडिट जो बिहाइंड द सीन हमारे खामोश मुजाहिद लेना नहीं चाहते. हारून साहब का है, व्हेन वी स्टार्टेड CPDs few months back we discussed this and the idea was कि क्योंकि हमारी एक डाइवर्स अटेंडेंस होती है, we'll try to use Urdu as much as possible ताकि इफेक्टिवली जो पर्पस है नॉलेज डिलीवरेंस का वो हासिल हो सके. We'll continue doing that. Thank you. All right, there are people who are asking examples of different types of questions. But before that, Bilal Nasser has shared a link where he's saying too many members asking about salary negotiations. Bilal Nasser has shared the link which I have now sent to everyone in an answer. Right, so आप इस link को check कर लें. We haven't checked it ourselves. All right, people asking about examples of different types of questions. Let me answer that. ये हमने डिस्कस किया था, आपके सामने स्क्रीन पे स्लाइड आ गई है, मैं दोबारा क्विकली दिखा देता हूँ. ये आपके सामने क्लोज क्वेश्चन की मैंने आपको एग्जांपल दी थी जिसमें सिंपली यस नो आ सकता है. फॉर एग्जांपल आप इस चीज आप 10% डिस्काउंट पे ये हमें देंगे या नहीं, आप 20% डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं या नहीं. क्लोज क्वेश्चन वो होता है जिसका जवाब यस या नो में आए. नॉर्मली इसको इसलिए अवॉइड किया जाता है कि कन्फ्रंटेशनल बन जाता है अगर आपको नेगेटिव जवाब आए. इसको कहाँ पे यूज किया जा सकता है? फ्रेम सेटिंग या अपनी अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए. फॉर एग्जांपल आप काउंटर पार्टी को कहते हैं, अच्छा तो आपका मतलब था कि हम इस कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखते हुए अपने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से रेलिवेंट फिगर्स ले लें. वो कहेगा यस. क्लोज क्वेश्चन यस नो में जवाब आए, कहाँ पे यूज करना चाहिए? अपना नॉलेज कंफर्म करने के लिए कि आपने यही बात की, फ्रेम सेट करने के लिए, या अगर आप डिस्कशन कंक्लूड कर रहे हैं. फनल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जहां पे काउंटर पार्टी की स्टेटमेंट्स के अंदर से, क्वेश्चंस के जवाब में से आप अपनी रेलिवेंट चीज को लेकर डिस्कशन फर्दर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी इस पे 10% डिस्काउंट जो है मार्केट में ऑफर किया जा रहा है, आपकी इस बारे में क्या राय है? कहते हैं जी बिल्कुल हम भी 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं, आपको एज अ स्पेशल केस हम 12% ऑफर कर रहे हैं. अब आप फनल क्वेश्चन क्या है उसी में से ड्राइव करते हैं. वी हाईली अप्रिशिएट आप हमें 12% ऑफर कर रहे हैं. हम एक्चुअली ये प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ ये ज्वाइंट वेंचर किया जाए XYZ प्रोडक्ट में, तो इसमें इतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी. आपने मेंशन किया कि लॉन्ग टर्म के हवाले से आप एडिशनल रिबेट ऑफर कर रहे हैं, तो आपका इस बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? अब वहां पे वो फर्दर रिस्पॉन्ड करेगा. द आइडिया इज कि उनकी बात के अंदर से आपने पॉइंट लेकर इस तरह पुट किया कि वो जो रिस्पॉन्स दें वो आपके गोल से कंड्यूसिव होता जाए. ओपन क्वेश्चन जिसका जवाब यस नो में नहीं हो सकता, लंबा जवाब देना पड़ता है. मिसाल के तौर पे व्हाट डू यू प्रपोज लिखा हुआ है स्क्रीन पे, व्हाट डू यू प्रपोज कुड बी अ बेटर वे टू रीच अ कंसेंसस. आई थिंक द बेटर वे वुड बी कि हम आपस में डिस्कशन करें, थोड़ी सी आप लीवे हमें दें, कोई ऐसी चीज दें जो हम भी अपनी मैनेजमेंट को कह सकें, एंड विल ट्राई टू अकोमोडेट यू एज मच एज वी कैन. परफेक्ट.
तो क्या चीज हो सकती है जो आपके लिए, आपकी मैनेजमेंट के लिए वैल्यूएबल हो सकती है? देखें, आपका जो रिफर्बिशमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो XYZ को जा रहा है, जो आपको हमारे से ज्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं। अगर हम आपको क्वालिटी एश्योरेंस दें और बेटर रेट दें, और अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमें दें, तो हम यहाँ पे आपको अकोमोडेट कर सकते। थिंग्स लाइक दीज ओपन क्वेश्चंस का क्या फायदा है कि यस नो में जवाब नहीं आता, डिटेल्ड डिस्कशन होती है, यू गेट अ पीस ऑफ द काउंटर पार्टीज माइंड, एंड इट is effective for developing a conversation, finding out more details, and finding out the counterparty's perspective, opinion, or issues. I hope that answers. Next. Okay, excellent. Mohammed Amin is asking, if an interviewer asks a question which unfortunately you don't know, how to deal with the situation? It's a tough situation. The best you can do is stay confident. It would depend on a question. You can politely mention that right now, I believe I would need to check back and respond on that. So you are not going to exactly say, I'm totally unaware and I came unprepared, but you are not going to lie either. Be confident and state the fact in a positive and diplomatic manner, but avoid lying, because the interviewer is not stupid. They would find out. Amin has also asked what was the right option for the poll question, and the right option was option B, which was body language. We have our poll guru here. Next. Fawaz Khan is asking, and an interesting question, by the way. He's saying, my boss is a very successful salesperson. Mm-hmm. He has excellent negotiation skills and has the habit of winning in every situation. His bad side is that he's a very bad listener. Whenever I prepare myself to negotiate, he hardly gives me enough time to listen to my perspective. Any tips to deal with him? A very common sickness in our society. मैंने आपको शुरू में मेंशन किया था ना कि बॉडी लैंग्वेज 60 to 80% है, लेकिन सबसे वैल्यूएबल चीज लिसनिंग इस लिहाज से है कि सबसे कम है। लोग बोल भी लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी सुनते नहीं। अच्छा, उसका एक तरीका प्रोफेशनली ये होता है, सेट द एक्सपेक्टेशंस। व्हेन यू आर देयर, your boss has called you to make a presentation, salam dua, and then very politely, sir, I would just need your attention for 2 minutes, 3 minutes. और normally attention span इतना ही होता है आमतौर पे, especially people in higher position. If you can't make your point in 2 to 3 minutes, you can't make it afterwards. So you have to learn to be succinct, to the point, yet effectively elaborative. At the same time, set the expectation right. That is the best possible course of action you can follow. Next. Taha Abbas is saying how to negotiate with the boss of a boss. Boss of a boss. While you, I think bosses, this session should be around bosses. We can name the next session salary negotiation and how to deal with bosses. While you know that you are not on his good books, how to deal with a boss, boss of a boss? Okay, it's a very vague question, a good one, but very vague. What are you trying to negotiate for? Why are you not on his good books? Are you trying to discuss something about his junior, your immediate boss? Something about you. If it's about you, why are you crossing the hierarchy? So it has to be a bit specific for me to guide you specifically. General question would be the general answer to this would be follow what we have discussed. Next. Sheikh Nabil Tahir is saying, should we really understand other parties' concern or just a part of plan to negotiate? You should. You should. It always help. आपका long term relationship build होगा. देखिए, I always follow that personally. और मैं आपको बताता हूँ, मेरा कोई ऐसा client नहीं है who has ever left me. Our firm has been in business for 30 years, and most of our clients are going back decades. I came back in Pakistan about 5 years ago when I started I joined the practice here before I was abroad. So my clients from 5 years ago, they are still with me. People offer them lower rates. People offer them several things. They are not prepared to leave me. Yes, technical competence is there, alhamdulillah, but some of the other people may also be able to offer that. So it is something extra that they are getting. And one of that thing is actually be empathic, actually trying to understand the other person's perspective. Next. Muhammad Azam Jameel Malik is asking, I being a consultant, the other person on the client side come with a mood not to listen.
What can I do in that situation? You listen, let them speak. जितना ज्यादा आप इफेक्टिवली सुनेंगे, एक तो उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन काउंटर पार्टी आपको देगी. दूसरा, अगर आप इफेक्टिवली सुन लेंगे ना, there would be a sense of rapport building. I remember Dale Carnegie is a very famous name in these areas, the soft skills. और very quickly, अपनी एक बुक में उन्होंने एक वाक्य मेंशन किया. He went to an event, there was an old lady there. He sat next to him. She kept on speaking for 2 hours. He said, I didn't utter a single word. मैंने एक लफ्ज नहीं बोला, कोई शादी का फंक्शन था या something like this. When I got up, the next day I got to know कि सारी फैमिली में वो मुझे कह रही थी, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत जबरदस्त कम्युनिकेटर है, बहुत जबरदस्त इंसान. इफेक्टिव लिसनिंग वर्क्स अ लॉट. और जब आप इफेक्टिवली लिसन करेंगे, कभी ना कभी तो अगला बंदा थकेगा. अगर आप इफेक्टिव लिसनर हैं, then you'll be in a very good position to use the other techniques to try to get what you wanted in a fair and just manner. Next. Raza Nayani has extended the situation with Chinese about the Chinese supplier. Mm-hmm. He's saying Chinese cannot understand English properly. Negotiation always happens better if it is face-to-face work. What should we do in that situation? Written communication, negotiation, or what? Very true. That is unfortunately a hindrance, but I don't know the organization you are working in. For example, I was heading the finance department in a multinational, so we had translators. And at times, the Chinese delegations were actually good in speaking English. They had studied abroad. So if you are facing this situation, you have to see what resources your company or business is offering. If you are a small or a startup business, then perhaps you can try to get some services on different websites of translators. If that is not a possibility, then you can go towards written communication. But the written communication can be in a manner where when you are like concluding or in the final phases, you try to communicate while setting up a Skype or something, because this element almost always matters. अगर आप written communication कर रहे हैं, आपकी body language, आपकी vibe, courtesy, all that is missing. You are basically depriving yourself. So due to this inherent limitation, आपको उसको initial negotiation में use कर सकते हो, but later on I would suggest to develop a way where you can bring in these factors for your advantage. Next. Mohan Dayal is saying the typical seniors issues. Typical. And I agree. Seniors tend to listen to what we say or suggest, quote it as their own suggestion, and ignore to give you the credit. Okay. Yes. So, isn't that a little demotivating? Okay, there are two ways to do things. One is get demotivated. What will you get out of it? The second is, do you like fragrances? खुशबुएं पसंद है. आप देखें, खुशबू लगी हो ना, वो रुक नहीं सकती. You keep on doing good. How long? 1 महीना, 1 साल. This would spread. I faced the same thing. I was mostly lucky. I had very good mentors and seniors, but there was one wonderful individual who used to do similar things. अच्छा, my grooming is such that कि मेरा perspective होता है, don't focus on negativities, focus on excellence, keep on doing the good. आप देखिए, I kept on doing the good, the guy kept on taking credit, I would just smile and laugh it off. After a few months, everyone knew that. I didn't tell anyone. People started knowing that it is this guy who is doing all that. अगर आप में competence है, अगर आप persistent रहते हैं, और अगर आप courteous हैं, eventually आपकी abilities would come to the fore. अच्छा, आपके पास alternate क्या है? What alternate do you have? Confront him? That's not gonna work. Leave the job? That's not gonna work. Get demotivated and don't perform? That's not gonna work. So what can work? Well, I believe you should focus on that, and in long term, believe me, that would actually deliver value for you. Ideally, ये चीज नहीं होनी चाहिए
लेकिन हमारी सोसाइटी में है अनफॉर्चुनेटली इनसिक्योरिटीज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज है. इसमें बेस्ट अप्रोच ये है कि आप keep on delivering the best you can, you would eventually start getting credit and reward. Next. Mohinder Kumar is asking this. You just said that English accent should be simple. Should we change the accent during the discussion to make them feel that we are one of them, especially during interviews with foreign companies? Oh, no. They can actually perceive it as an attempt to mock them. ओके मीन अगर आप एक चाइनीज के साथ बात कर रहे हैं, आप उसकी तरफ बोलना शुरू करते हैं ना, बिलीव मी वो कहेगा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. सो द वे इट शुड वर्क इज महेंद्र, व्हाट आई मेंट इज कि ओके लेट मी गिव यू अ लाइव डेमो. Why me wear your pin? Now you might have understood what I said, but not many people would have been. Now I'll say that again. Blimey, where you have been. I'm pretty sure almost all of you understood what I said right now. So the matter is, you are not trying to imitate others कि उन जैसा accent होना चाहिए. You are trying to have an accent or a way of communication जहाँ पे आपकी बात लोग समझ सकें. अगर लोग आपकी बात समझ नहीं सकते तो it doesn't matter कि कितना खूबसूरत accent है आपका, आप communicate नहीं कर सकते. That's the principle I'm referring to. Next. Sana Salim is asking how to negotiate on rising contract price when face losses due to some natural disaster. Sana, you have to share some specifics. Maybe it's best to email me later on, like what was the scenario, who you were negotiating with, what was the nature of contract, why the losses arise, and then I'd be able to guide you specifically. Next. Azam Shafi is saying sometimes there's a situation where you got another offer from another employer. Mm-hmm. How to effectively use this offer to negotiate with current employer? Well, whenever you have your salary review or whenever there is such a situation and you have this counter offer, you can, by following these principles, outlining your work for the firm, expressing your loyalty for the firm, mentioning the calls on your income, the pressures, and how you want to deliver value for the firm, and then somewhere later on in between a slight reference that XYZ has made this offer, but you want to continue to grow old with the firm in a very decent manner. That almost always works. Next. There are a few people who are repeatedly asking their own old questions. I would not put up those questions again. Okay. I would encourage those people to watch the recording and look at the answers that we've already provided. Okay. So if you are repeating your question and you are not hearing it, this means it had been answered before. If you missed it out, I'll share my contact details later on. You can always contact me, or the recording would be available next week on Vimeo. You can always go and check there. Next. Okay, the next one is how to enhance your PR through negotiation in workshop or seminars. How to enhance your PR through negotiation in workshops and seminar. Well, it depends on what type of workshop and seminar you are doing. By delivering an effective one, you are, by the very definition, increasing your PR. Next. Sorry, in my experience, this is Hisan Rafaqat. In my experience, people in decisive position tend to come on a decision before getting all the facts. How to handle this and communicate in order to get them to ponder on the facts before taking a final decision. Okay, how many questions do you have after this? I think about a dozen. Perfectly fine. After this, we are going to finish off the presentation and have all the questions then. Okay, a very good question. Look, no one wants to have something that can look bad on them. No one wants to take a decision that would reflect badly on them. People believe certain things. They might not have the complete information. We can't make categorical statements. There may be people who are doing exactly what you are saying, but not all of them are. So the people who actually are doing what you said, कि पूरी information आपकी बात सुनने से पहले mind makeup कर ली है, उनको आप effectively communicate करें उनके perspective से. Use funnel questions. Use open questions. Your body language should be positive. Point out what is their interest. Offer them something which is of value to you, them. मैं अगर आपका बॉस हूँ, मैंने माइंड मेकअप कर लिया और आप मुझे ये कम्युनिकेट कर देते हैं कि मेरे इंटरेस्ट में ये और चीज है, मैं क्यों नहीं वो करूँगा.
लेकिन अगर आप इफेक्टिवली मुझे कम्युनिकेट कर सकें तो आप इफेक्टिवली ये निगोशिएट करा सकें, और उसी के लिए ये हम सारी चीज कर रहे हैं. बहरहाल लेट्स सी हाउ वी डू दैट. My personal favorite, और जिसमें we found out Harun Saab is an expert too, body language and its importance in negotiation. आपके सामने ये 4 तस्वीरें हैं. Very quickly, you guys have like 20 seconds. ये बताइए कि इन चारों में 1, 2, 3, 4 आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? Actually, I'll give you 30 seconds. Start writing so I know कि आप respond कर रहे हैं. You have first 2 pictures of US President Barack Obama. You have next 2 pictures of a meeting settings. Third one is a team meeting. Fourth one is just a focus of hands from a particular meeting setting. G, any response? Yes, I think you could just start giving your answers. All right. One, asking someone to stop, and second is listening. Okay, and Otherwise, I appreciate the attempt too. Not sure what to do, what to say. Okay. Mohammed is saying 3, discussion. Vinder Kumar is saying second, listening nicely. Listening, I think. Mirza Beg is saying first, hold down. Gibran Ahmed, be disappointed. Tahir Hussain, 1, addressing to make a statement. Muhammad Usman, second, listening. Okay, done. Shafiq, stand off. I'll show you what's happening. Confidently making a point, showing who is in charge. Withdrawing, closing out. Either I'm not interested or I'm feeling uncomfortable with you. Closed hands are a sign of that. Third one, both teams, confrontation, all team like this. Fourth one, confidently, politely, but firmly expressing a point using your body language effectively. The purpose of this quick exercise was to show you how important is body language, and without saying a word, how effectively you can communicate your emotions or make a particular point. So effective negotiation is about more than just saying the right things. It involves commanding your body language, your emotions, which is an essential art and has been studied extensively for many years. But it almost always proves to be a very important challenge for anyone aiming to become an effective negotiator. It is now widely accepted that over half the communication, 60, 70, 80%, there are different studies, is non-verbal and through body language. That shows the importance. So how should you try to become an effective negotiator in terms of having command over your body language? Number 1, mirror counterparty's action. Adopt their body language, vocal tone, and behavior, which builds rapport. Do not mirror their actions if they are aggressive. If they don't know about it, अगर उनको नहीं पता, आपको तो पता है, आप प्रोफेशनल हैं. आपने सिर्फ वहां पे मिरर करने हैं उनके एक्शन as long as they are positive. For example, if the counterparty is engaged, they would lean forward, listening to you attentively. Mirror that. Show that you are also engaged. You are also paying due attention. If that's not the case, and the person is leaning far back, crossing their arms, try to find a way to bring the person back in. Maybe you can come forward, try to make a point, try to engage. Nod your head when you are listening, keep on nodding. It shows the other person you are attentive, you are listening. Maintain the eye contact, as Harun Saab shared before. Doing this in negotiation actually diffuses tension and build alignment, even during contentious conversation or arguments. Hands position. Nervousness or stress जो होता है ना, normally हाथों से सबसे ज़्यादा पता है. आप उंगलियां ऐसे फिजेट कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, टैप कर रहे हैं, पता लग रहा है anxious. Never do that. Your hands always, especially when you are communicating and negotiating, make sure your hands project a confidence voice. Do not fidget or clasp, or it would give the other party the advantage of knowing that you are nervous. Try putting your hand just below your chest and put your fingers together when you want to confidently make a point. See?
Keep your feet planted. Well, you can't see my feet, sorry about that, can't do much about it, but your feet should be firmly planted on the ground. Most of the time it won't matter if you are in a conference table where nobody can see, but in a situation where you are in a setting where that is not the case, then you have to ensure that your feet are planted on the ground too, and your body posture should almost always be relaxed. That would complement your soft-spoken or non-aggressive commentary and would help build the trust to lead towards more effective negotiation. शुरू में मैंने बात की थी कि मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं. As long as you are not crossing the line, being courteous is actually being highly professional. So मुस्कुराइए, आप एक फ्रेंडली इमेज देंगे, एक प्रोफेशनल इमेज देंगे, और पॉसिबली दैट वुड हेल्प इन बिल्डिंग द रिलेशनशिप. ओपन पोस्चर, मैंने जो अभी आपसे शेयर किया तस्वीर में कि इस तरह बाजू क्रॉस करना, ये बड़ा कॉमन होता है. आप देखें इवेंट्स में, गैदरिंग्स में लोग ऐसे खड़े होते हैं. ये सबकॉन्शियसली ये दिखा रहे हैं कि आइदर द अदर पर्सन इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, थोड़ी सी आपसे फॉर्मेलिटी फील कर रहे हैं, पुट ऑफ फील कर रहे हैं, या they are not very much interested in the topic that is being discussed. So you don't want to give these ideas जब आप negotiate कर रहे हैं. Keep your posture open, lean in, act engaged. People want to feel that they are important and you are interested in their discussions. There's another interpretation of this posture also. Yeah. You have some information that you're keeping in your chest. You're not saying it. So that communication is hurdled. Precisely. See? We are getting expert input here. Okay, don't show your nerves. Any signs of anxiety or nervousness can be a setback for you. Don't bounce your leg, don't tap your feet, don't touch your face, especially nose. You want to appear calm and confident. Facial expression, control आपको करना पड़ेगा. Unless they are assertive and following your verbal commentary, you can have a poker face. Don't give out any facial expression if you can't control your expression in a positive manner. Patience, be focused and patient. Explain things. अगर आपके लिए वो obvious भी है, याद रखिए हमने बात की थी कि काउंटर पार्टी के लेवल पे आके आपने डिस्कस करना है. बॉस का नॉलेज कम है, ये ना कहें कि बॉस कैसे बन गए. उनके लेवल पे आके पेशेंटली आप डिस्कस करें. बी एम्पैथिक. उनके लिए दिल में आपके एम्पैथी होनी चाहिए. Put yourself in their shoes and maintain eye contact. So this brings us to the benefit of negotiations. हमने इसको discuss कर लिया. I'll quickly go through that. Can prevent conflict, better outcome, new opportunities, relationship build or strengthen हो सकते हैं, public trust create हो सकते हैं, personal satisfaction, career development, increase confidence and enhance reputation. Which brings us to last session of the day. Isn't it interesting? Our time management is brilliant. Poll question? No. We'll have the poll question after ending these two slides. So there are two more. Two more. The last one is just the feedback, sir. Okay, negotiation opportunities for accountants. हमने ये सारी डिस्कशन की, हमने ये सारी बातें की. अब हम इसको टाई इन कर रहे हैं कि us being professional accountants, हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे ये सारी एक्सरसाइज, ये सॉफ्ट स्किल हमें हेल्प कर सकती है. टू बिकम अ गुड नेगोशिएटर, सबसे पहले तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड अवेयर. You need to know about your co-workers job, उनकी responsibilities, objectives आपके vendors के, suppliers के, so that you can work better with them. All this information will make you a stronger negotiator, and the better negotiator you are, the more successful you would be, and information is power. So ये सारी information आपको आपकी बाकी working में भी मदद करेगी. पहली चीज. दूसरी चीज, एक business framework में negotiation, buying, purchasing, selling, staff contracts, pay, salary negotiations, borrowing of loans, transactions, etc. इन सब में यूज होती है. एम्प्लॉयज और ट्रेनिंग्स जो है वो जब नेगोशिएट कर रहे हैं तो वो अपने बेनिफिट्स, अपनी ट्रेनिंग, अपने कैरियर प्रोग्रेशन के हवाले से नेगोशिएट कर सकते हैं. इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स और कोलीग्स से, इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं. You can prepare and practice negotiating techniques that work in resolving conflict. You can help achieve your goals and improve your relationship by effectively negotiating. You can enhance your value to your company by being an effective negotiator. दो CFO हैं आपकी कंपनी में, दोनों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर चार्ज दिया गया है, बहुत बड़ी कंपनी है.
एक बाय साइड को देख रहे हैं, एक सेल साइड को देख रहे हैं। एक जो है वो टोटल फोकस सिर्फ नंबर्स पे कर रहा है, उसकी सारी अकाउंटिंग परफेक्ट है, रिपोर्ट सारी सही है, ऑल दैट। दूसरे का भी ये सारा बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत इफेक्टिव निगोशिएटर भी है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है उसमें कंपनी को कुछ ना कुछ सेव करा देते हैं, एम्प्लॉयज से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बेहतर दिलवा है, किसकी ज्यादा वैल्यू होगी बिजनेस के लिए? ऑब्वियसली द वन हु इज एडिंग एक्स्ट्रा वैल्यू। सिमिलरली जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं ना, पहली चीज, अभी आपको वहां पे रियल केस स्टडी नहीं मिली, अभी सिर्फ आपका रेज्यूमे देखा गया है, किसी को नहीं पता आप टेक्निकली एक्चुअली कितने कॉम्पिटेंट और सक्सेसफुल होंगे वर्क एनवायरमेंट में। It's your confidence, your successful communication, your effective negotiation, your body language, your questioning, your listening that would make the first impact. So आपका कैरियर शुरू ही वहीं से हो रहा है, and throughout your career you'd be relying on it to assist you. और आजकल जितनी ज्यादा कटथ्रोट कंपटीशन है, ACCA माशाल्लाह आप सबको टेक्निकली इक्विप करता है, तो फिर मार्केट में क्या होता है? मीन इफ आई एम एन एम्प्लॉयर, मैं अपनी फर्म के लिए हायर करूं, टेक्निकली इक्वली कॉम्पिटेंट पीपल आए, किसको मैं करूंगा? हु इज ऑफरिंग मी सम एक्स्ट्रा वैल्यू, जिसके पास पॉसिबली सॉफ्ट स्किल्स है। और सॉफ्ट स्किल्स में नेगोशिएशन स्किल्स रैंक राइट ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की। सीनियर रोल्स, स्पेशली हायर मैनेजमेंट टू बोर्ड लेवल के लिए इफेक्टिव नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन इज अ मस्ट। अगर you are going to be a face of an organization, you have to be effective negotiator and communicator. If you are not, you will be destroying the brand of the company as well as yourself. So it can lead us to endless possibilities, and we can keep on discussing that. But we'll have a poll question and your specific questions, especially about salary negotiations now. But before that, I'll let you have the slide on your screens. जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने है, माय कॉन्टैक्ट नंबर, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स, माय ऑफिस एड्रेसेस। बेस्ट वे टू रीच मी इज टू सेंड मी एन ईमेल। कोई आपका क्वेश्चन है, स्पेसिफिक है, feel free to answer, feel free to ask. I would try to answer as quickly as possible. लेकिन हमारे कुछ इवेंट है, प्री बजट सेमिनार्स हैं, कुछ सीपीटी सेशंस हैं, कुछ एम्प्लॉयर एंगेजमेंट है, बजट प्रपोजल प्रेजेंट हो रहे हैं, ऑनगोइंग एमएनपी इलेक्शंस भी हैं which I'm contesting, so I might not be able to answer you very quickly, but I would try to get back to you as soon as possible. So feel free to contact. And with that, I would request Harun Saab to please pop up a poll question, and we'll then take your questions. Question on the screen now. As before, it doesn't matter कि आपका जवाब सही है या गलत है, आप simply जो आपको जवाब लग रहा है वो रिस्पॉन्ड करें। The question is, how should your arms not be during negotiation? I think not को emphasize करते हैं तो। सर आपने तो क्वेश्चन ही इजी कर दिया, नॉट को एम्फसाइज करके। That was actually the trick to see who is actually awake and who is sleeping. Exactly. So the first option is crossed and the second option is open. And Harun Bhai has given you a very good helping point. The focus point is not, it's not how your arms should be, it's how they should not be. So align your thought process. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का ना क्वेश्चन। अगर कोई थके हैं या थोड़ा स्लो हो गए तो वो हाँ अलर्ट हो जाते हैं। 20 seconds. हारून भाई एंड ऑफ डे 10 सेकेंड्स तो बढ़ा रहे हैं। We might actually break the record. It seems like we are almost there. Come on guys, respond. 68%. Come on guys, come on. 10 grace seconds. And the record is equal. Come on guys, one more, just one more. Oh gosh. So time's up. Stop. So we equaled the record. Okay. All right. Should I? Yes, obviously. The question was, how should your arms not be during negotiations? I think 34% misunderstood, ignored the not, or 34% was saying should not be open. They should actually be open and not crossed. So 66% have given the right answer. The right answer is that your arms should not be crossed. Very well. Absolutely. So well done to all of you for responding. But
Very well done to those who selected the right answer. अब last but not the least, जो आपके questions हैं, please feel free to ask. और questions के बाद फिर हमारा last poll question हो जाएगा. All right, very quickly, and I think since we are short of time, let's make 6 बजे लोगों के office बंद हो जाते हैं. Sure. Let's try to give short answers. Taha Abbas is saying, he's rephrased this question. There are times when we have to negotiate for our career with our CFO or head of department, while the manager is in line with you and has praised your performance, but due to some third party, he is not giving a good perception of you. So how do you deal with this situation? इसको हमने पहले डिस्कस किया था कि you can approach it in view of these principles, focusing on the value you have delivered, and if the third party response is not valid, why, logically speaking, it can't be true. Focusing on their perspective, trying to use funnel question to bring it out of them while you confidently but in a polite manner plead your case can actually lead towards positive results. Next. Taha Abbas gives the comment, says we have attended many webinars, but this one I can particularly say is the most interactive one, yet very informative. Thanks for your time and knowledge, Mr. Most welcome, Taha. Thanks for the compliment. Al-Muhan Zia is saying, thank you for a perfect example of fragrance. Much appreciated. You're most welcome. Arshad Ali Zaidi was asking, how can we improve our negotiation skills? I think that's what we were discussing in the past. 3 hours. Okay. Just have a look at the presentation and the recording. If you still can't get it, shoot me an email or give me a quick call. Amjad Ramzan is saying, how can we do the win-win negotiation with local stakeholders that they always look to their undue demands, especially in the oil and gas sector? I agree. लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडेबल है, ऑफ वैल्यू है, वो क्या है? इंसान को दो चीजें ड्राइव करती हैं, लालच और खौफ. ठीक है. So when you are going towards partnership, creating value, excellence, using tradable, वो चाहे लोकल पार्टनर हो या बाहर, वो उसके ऊपर काम करेगा. प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे नॉर्मली खौफ के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं, कंपटीशन बीट ना कर दें. आप इसकी बजाय अगर अपना फोकस यहाँ पे शिफ्ट करें, जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं, ये सारी लोकल मार्केट में इफेक्टिव भी हैं. I've even personally used them and they are very successful. इसके बावजूद कोई अगर स्पेसिफिक आपके जहन में क्वेश्चन हो, feel free to shoot me an email or call me. Next. Rizwan is saying a webinar on job search, covering letter, CV, interview, along with salary search negotiation by Mr. Neil Rees, but in detail. It's a good idea. We can do that, or we have our head of education team, Mr. Faisal here. We can also request him to join in a future webinar on the topic. Too busy with this phone. Yeah, we'll discuss that with the ACCA team and come up with a response, inshallah. But it's a good suggestion. You just realized. He's saying a session on how to search a job. So maybe you could help us with that session. Rizwan then says, thank you for doing such an extraordinary work, everyone. You're most welcome. Then moving on. Hisan Rafaqat. I find myself performing nervous habits such as touching my hair, face, looking at my fingers, playing with the pen on the table, etc. during meetings and such. I know that I am not hiding anything or lying or bored. How can we control such nervous habits from taking over us? If try to force stop, then I find myself yawning. A very good question. It's normally due to lack of confidence. The way you can do it is, first of all, go to your room, your washroom, wherever you have a mirror, start practicing in front of that. Secondly, start practicing with friends or someone you are comfortable with. Thirdly, when you go in a room, do some alternate, maybe just slightly press your teeth together. When your focus is elsewhere, you are able to control these things. Next. Hisan Rafaqat again saying, accuracy is the most important thing for an accountant presenting accounts. Mm-hmm. Although
homework before presenting accounts is important, but learning the whole general ledger is not possible for me. Therefore, when asked for breakups for various line items, I get nervous that the client may discover something that points towards my weakness. How to be confident during this scenario? And what was the name? Hassan Nisar. This is more about presenting and communication skills rather than negotiation. Yeah, but Hassan, the thing is, you need to be confident. पहली चीज, आप ACC हो, आप ये चीजें पढ़ चुके हो, आपको क्यों लग रहा है कि आपको नहीं लेजर का पता, आपको नहीं लाइन आइटम्स का पता? कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड स्पेस चीज तो नहीं है. आप हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर चुके हो, आप ये चीजें सीख चुके हो. अगर आपको फिर भी फील होता है, work on your vulnerabilities. Take a ledger, start discussing with a friend. Ensure कि जो चीज आपको less confident कर रही है, you can get that out of the way, because being confident, believe me, is more important than anything else. If you are 100% right and you are not confident, that would go negatively. Next. Very, very quickly. Sometimes we try to negotiate with our boss on some terms with proper alternatives, but they come up with very different options. In that case, what should you do? This is Ajit Kumar. It's a very vague question. Send me an email with specifics and I'll be able to guide. Mohinder Kumar says, excellent session, learned a lot, would like such sessions in future. Definitely will add value to us. Thank you, highly appreciated, and that's the aim of ACCA. Mohammed Amin saying, sir, I need to ask a personal question on income tax. May I mail you later or text you? Which one is better? Someone received LPR notice under section 114. Just send me a text. I can see it on the way back. Okay. Muteeb Nazir says, thank you, sir. Mohammed Yusuf says, excellent webinar. Thank you. Imran Ahmed says, thanks to provide that much useful information. Most welcome. Shahzad Anjum saying, very effective and informative, really impressive. Thanks. Akbar Panjani says, for negotiations, confidence is everything, or the content plays its part the most. True. It's a very good question. Content is very important too, but all these other skills are extremely important. There is a study some time back. The study stated that preparation content is about 15 to 20% of the success, and 80 to 85% is about all these other factors. Your confidence, your communication, body language, questioning skills. There you go. Ghulam Sabir says, many thanks, really effective seminar. I'm going to update my CV for skills negotiator. You are most welcome. Great. Muhammad Ammar Baba says, thanks for a great workshop. Hope it really helps. Ajit Kumar says, I was attending this session for the first time. It was very good and informative, but there was audio problems sometimes. We really appreciate, and we are very sorry for the issues that you faced. And the technical team tried to fix it as soon as possible, thanks to them. But Ajit, the good thing is you will have the recording on Vimeo, so you'll be compensated for anything that you miss. And I think they can listen to it as many times as possible. True. You have the knowledge library. Time. I think a repeat of the session will be fantastic. True. Mohammad Alum Shakti is saying, I would really appreciate that in the end you would discuss the negotiation power of ACCA members in the Pakistan job market. Look, not just ACCA member, anyone in the job market, when you are going in the job market, you are the product. You are selling yourself. You need to list down a SWOT analysis of yourself so that you understand yourself better, and then focus on your strength in line with the opportunities, and you'll have the result. ACCA is already delivering value in the areas that were perceived to be weaknesses of ACCA members, like taxation and local laws, the soft skills and all that. So now it's up to you to develop a SWOT analysis and effectively approach the job market. Just sending out CVs is not sufficient. You'll have to call them up. You'll have to go and meet them. You'll have to actually plead your case. That's the way it's done around the globe, especially in today's stiff competition markets. Next. Asad is saying, if one is dealing with a senior employee who is stringent over a company policy which is leading to loss of vulnerable contract, how can we influence or bend his decision? Well,
If the person is standing on principle and ethics and is senior and has the merit on his backing, there is not much you can or should do. If the situation is different, email me the specifics or call me up sometime. I'll be happy to guide. Next. Yes, sir, Aziz, thanks a lot for such a great webinar. Abdul Wahab saying, Mr. Umar, thank you very much for your very useful session. Wish you all the best for your MNP elections. You're most welcome. Saeed Anwar says, thank you, Mr. Umar, for an interactive and informative session for us. Azam Shafi saying, ACCA member market. I think this has already been answered. Akbar Punjani says, is there any relation of personality with the attire at negotiations or any interviews? The personality types are very important, but the concept we discussed here is that you have to control yourself. You have to handle your emotions. You have to conquer yourself in order to be an effective negotiator. I think it's talking about personality and attire. Yeah, I'm coming on to that. As to the personality and attire, your personality you can control. Your attire basically has to be guided by the environment. For example, if I'm negotiating in a corporate environment with maybe foreign delegations, wearing traditional Punjabi dress wouldn't matter much no matter what my personality is or no matter what anyone's personality is. So attire would most have to go with the setting that you are mentioning, that you are dealing with. Yeah, within the attire categorization, the color you are choosing, the material you are choosing, that should go with your personality type. I agree on that. Next. Okay. Kashif Rashid is saying, thank you, Mr. Umar and others for organizing such a knowledgeable lecture. Hunain Muhammad Rashid is saying, my question is for Bilal. We are attending ACCA CPD programs such as today's webinar, IFRS tax, etc. We have certificates for attendance provided by ACCA. Under which heading can we mention these certificates on LinkedIn? Please advise in your profile. Just 1 second. First of all, I would like to share with you all that Ahmed is today dealing with customer services, and head of member affairs, Mr. Harun Jan, himself has graced the occasion, and he is the one taking care of the questions here. Secondly, Harun Saab can answer this better. I can just share, you can list them within the certificates categories. These are certificates that you are getting, certifications. And last but not the least, thank you for all of you appreciating the efforts. I would like to share with you the credit goes a lot to Mr. Harun Jan, Members Affairs Head, and Mr. Sajid Aslam, Head of ACCA Pakistan, because there was a certain pressure to not do the CPD events for a few weeks. But it was decided that we are professionals, and this exercise has been going on before, will continue in the future, and members' development is most important. So irrespective of any other process that is going on, the professional developments of our members should not stop, and I really appreciate this approach, and that's the way we all professionals should be. Next. Sana Salim is saying, this is great effort. Actually learned do's and don'ts, specifically the impression on client of small body gestures. Most welcome, Sana. Mohammad Hamza Arif is saying, in a situation both the communication parties are standing on their stance and not accepting each other, how can the third party intervene and help to handle the situation in a win-win situation? It depends. आप real life की बात कर रहे हो, corporate की बात कर रहे हो, third party का relationship क्या है दोनों parties के साथ, कितना influence exert कर सकती है, दोनों parties कितनी receptive है. So if you can share all these specifics, I can happily guide you. I think the best way would be shoot me an email or call me. Next. Asad Arshad is saying, wonderful interactive session, looking forward to improving my skills. Most welcome, that's the aim. Sorry, Rizwan Hashmi is saying, very impressive. Mohammad Hamza is saying, by the way, good webinar and learned a lot. Usman Khan is saying, thank you very much for your time and impressive presentation. Mohammad Bilal, time is over, looking for slide. I don't know what he's saying. Aslan Ahmed, thank you, sir. I think everybody's saying thank you, thank you, thank you. So many thank yous. Most welcome. Is there any question? One question. How an introvert can be a good negotiator? Practice makes not just a man but also a woman perfect. So if you are an introvert, the tips that I shared, practice in front of mirror, start practicing with the people you are comfortable with, and start doing it. I know many people in my professional circle who by nature are introvert, but
With practice, with their passion and commitment, they have become highly effective negotiators and communicators. And so can you. With this, I would like to thank you all. But hang on, we have a last poll question. No, I think quite a lot of people have left now. Okay. Because they thought that the session is over. Okay. If we'll ask the fifth poll question, they will be disappointed. So let's not ask the fifth question. They can send out their feedback through email. Okay, the fifth poll question was, how did you find this webinar? Awesome, excellent, good, or okay, just fine. So you can send us your feedback by email. You have Mr. Harun Jan's email. You also have my email if you want to copy me or send directly. I'll share with him, but the best way is to send him. Last but not the least, I would like to conclude by thanking you all on behalf of ACCA for your interest and high numbers on a Friday. And the attendance was really phenomenal. Your participation was good. And this is the aim and what motivates us. ACCA has focused on building your skill sets, especially soft skill, to equip you with the necessary knowledge. And I would like to thank Mr. Harun Jan for his time, the entire ACCA team, and also Mr. Faisal, who had to stay back actually for us because he couldn't go until we'll go. So thank you all. Have a very good weekend, and we'll see you guys soon. Have a good evening. Over to you, Harun Saab, if you want to conclude by sharing any remarks. No, I think we're fantastic. It's all done. I'm going to end the webinar.